I'm really thankful the Ministry of Food Processing for giving us this NIFTEM-Kundli, this opportunity to host this webinar for mainly focusing to the DRPs, the webinar which is entitled as Emerging Technologies in Fruits and Vegetables Processing and Preservation. So it's a pleasant duty to welcome our JS Sir, Shri Devesh Deval, who is also the in charge at Ministry for this particular PMFME scheme. On behalf of NIFTEM-Kundli as organizer, on behalf of the participants, DRPs and the other participants, I extend my hearty welcome to JS Sir, Shri Devesh Deval. I also extend a warm welcome to the speakers, esteemed speakers who would be joining us gradually, to all the speakers and the audience for the overwhelming support. And I'm seeing the good gathering. Still, people are joining. So with this, I once again welcome you all for this particular event, and I hope this event will serve the purpose or the objectives which we have just envisaged for this event. Thank you. Over to you, Arvind ji. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। मैं आपके और श्री जयेश सर के आदेश से मैं इस वेबिनार श्रृंखला का आरंभ करता हूं। सर, मैं आज के मुख्य अतिथि संबोधन के लिए विशेष सम्मान के साथ मैं अत्यंत गौरव एवं सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं श्री देवेश देवल जी, संयुक्त सचिव खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। सर, आपके नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में देश भर में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को नई दिशा मिल रही है और पीएमएफएमई जैसी महत्वाकांक्षी योजना जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से पहुंच रही है। आपकी उपस्थिति हमारे लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। सर, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कृपया अपने विचार साझा करें। धन्यवाद सर। थैंक यू, धन्यवाद अरविंद जी। बहुत बढ़िया, सूत्रधार, आपने अच्छे से प्रोग्राम की शुरुआत की है। थैंक यू। Good morning to everyone. Upadhyay ji, Registrar NIFTEM-Kundli, Dr. Meghwal, I think जो उनका शायद कनेक्टिविटी का इशू होगा, we will join shortly. Team from PMU-PMFME, states के जो हमारे participants हैं from the state program management units, and most importantly our DRPs. A very good morning to all of you, and I'm very happy to see कि हमारे जो participants का जो संख्या है, अभी 10 मिनट या 7 मिनट पहले इट वाज लेस देन 690 कुछ था, अभी 760 पे चला गया है। इट इज वेरी एनकरेजिंग दैट वी आर हैविंग सच गुड पार्टिसिपेशन। हमने एक्चुअली इसी सोच के साथ ये वेबिनार शुरू किया था, सीरीज। दिस इज द फर्स्ट इन द सीरीज कि बेसिकली बहुत सारी चीजें चेंजेस होती है, टेक्नोलॉजी में नए नए चेंजेस आ रहे हैं। वी हैव टू कीप पेस विद द टाइम्स। सो द बेस्ट वे टू रीच आउट इज टू आवर डीआरपीज, बिकॉज आप ही लोग हैं जो कि फील्ड में कनेक्टेड है विद पब्लिक। आप लोगों से ही पब्लिक का फर्स्ट इंटरेक्शन होता है। यू हेल्प देम इन गेटिंग द डीपीआरस प्रिपेयर्ड, यू गाइड देम ऑल थ्रू आउट द पीएमएफएमई स्कीम। व्हाट इज द स्कीम, व्हाट बेनिफिट दे कैन गेट, हाउ दे शुड अप्लाई, वॉट एवर प्रॉब्लम दे फेस ऑन इन द प्रोसेस, आप उनको हेल्प करते हैं। So it is very important that we thought we should have interaction, dialogue with our DRPs. So I'm really happy to see all of you here. Just a few things from my side. It's a technical session. I'll not take much time. हमारा portal है PMFME portal. We have the sample DPRs uploaded on the website. But I think ये सब exercise हुई थी 2020, 21, 22 में आसपास में exercise हुई थी. Now we are in 26. It's almost 5 years since we had prepared those DPRs, and technology is very fast moving. हर दिन कुछ ना कुछ नया चीज change आता है. So it is very important that we should understand कि उस सेक्टर में जिसमें हम काम कर रहे हैं क्या नई चीजें आ रही हैं। जब तक आप खुद इसमें इन्फॉर्म नहीं होंगे, we will not be able to guide people who seek our support properly. So इस सोच से हमने आज ये वेबिनार रखा है। Because fruits and vegetables are the most important. They are the most perishable product. Or India is among I think the second highest in terms of production in the entire country, in the entire world. हमारा 300 million plus ton production है fruits and vegetables का. So we are very important in terms of production. In terms of economic value also, it is very important. Every table fruit, every vegetable is more costly than anything else you can compare with. And also there is very high risk of perishability, post-harvest losses भी काफी ज़्यादा होते हैं. So considering all those things, we have selected this topic. We have a very list of eminent speakers. I would like to thank NIFTEM-Kundli for coming up with this, the detailed structure of the program. So to invite the best people in the industry, जो सबसे best लोग हैं वो आपको इसमें आज बताएंगे, different aspects को touch करेंगे. But we should understand कि
Within food processing also, fruits and vegetables is perhaps one of our topmost priority, because हमारा जो level of processing है इसमें बहुत कम है. जो various estimates हैं उसके हिसाब से शायद 5-6% ही हम करते हैं या 7-8% होगा. इसको कहीं ज्यादा improve करने की जरूरत है. So that is why we are starting with this one. I expect all the DRPs, आप लोग उसको please carefully सुने. Whatever presentations will be there, I'll request our PMU NIFTEM to please share with our MPME team or directly with the DRP, so that कि आप उनको और डिटेल में आराम से देख सकें. कुछ आपके क्वेरी हो तो एवरी सेशन वी आर प्लानिंग लाइक दिस कि हर सेशन में हम कुछ मिनट रखेंगे इंटरेक्शन के लिए. बट बिकॉज नंबर बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट हम 850 के आसपास नंबर आज पहुंचने वाला है अभी, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि सब लोग साथ बोलना शुरू करेंगे. You can raise your hand or you can type your query in the box. We'll take note of it and we'll try to address it. अगर कम queries होंगी तो immediately respond करेंगे. Otherwise we can send a mail to you or we can send a through other means also. So I request all the DRPs to pay attention. Please keep your questions towards the end of the session or at the very end of the program today, which we expect to complete by lunchtime. There are other things also, one or two other points जो कि स्कीम के हैं, not only in the webinar, just because सारे हमारे आज DRPs जुड़े हुए हैं तो मैं उनसे आपसे बात करना चाहूँगा. With your good support, हमारा जो परफॉर्मेंस है स्कीम का काफी इम्प्रूव हुआ है. अगेंस्ट 2 लाख हमने 1,93,000 सैंक्शंस अचीव कर लिए थे बाय 31st of March, और हमारा डिसबर्समेंट भी 1,60,000 पहुंच गया था, विच इज क्वाइट गुड. अब जो हमारा एक नेक्स्ट टारगेट जो हमने आइडेंटिफाई किया है, ऑफकोर्स द स्कीम विल कंटिन्यू. अभी इसमें प्रोसेस में है कि इसका एक्सटेंशन होगा, उसका आगे और कंटिन्यू करना है. फिलहाल 6 months के लिए अप्रूवल हमारे पास में ऑलरेडी है, तो द स्कीम इज कंटिन्यूइंग. बट जो अब हमारे टारगेट देखते हैं वो है फॉर्मलाइजेशन का. तो हम जब देखते हैं कि हमारे जो डिसबर्समेंट हुआ है वो 1.6 लाख का हुआ है, लेकिन फॉर्मलाइजेशन अभी सिर्फ 65,000 ही हुआ है. तो दैट इज आवर नेक्स्ट टारगेट फॉर ऑल ऑफ अस. आई रिक्वेस्ट ऑल द DRPs कि प्लीज आप इसको थोड़ा फोकस कीजिए कि हम जो फॉर्म्स, हमारे जो फर्म्स हैं, जो एंटरप्राइजेस हैं, उनको फॉर्मलाइज करने पे हम फोकस करें. दिस नंबर हैज टू इंक्रीज. एंड मुझे कहने की जरूरत नहीं है, यू अंडरस्टैंड ऑल्सो कि आपके जो इंसेंटिव भी हैं वो उससे लिंक्ड होते हैं. द सेकेंड पार्ट ऑफ इंसेंटिव यू रिसीव once the enterprise is formalized. So I think I'll request all the states who are here that please take note of it, और हमें अगले 2-3 महीने में इस पर काफी फोकस करना है, so that कि हम इसको जो हमारा फिगर है फॉर्मलाइजेशन का उसको हम इम्प्रूव करें. ये मैं आपसे एक बात करना चाहता था. Secondly, I'll just like to inform all our state teams and the DRPs कि now we are going to organize the PMFME conclave in the month of August. हम अगस्त के लास्ट महीने में दिल्ली में ये कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज करेंगे. सो वी हैव 3-4 months टाइम विद अस. आई थिंक इट इज गुड दैट वी ऑल इम्प्रूव ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स. हम जो भी स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के जो अलग अलग वर्टिकल्स हैं, हर फील्ड में हम अच्छा कुछ काम करें. हमने आप स्टेट्स को रिक्वेस्ट किया था कि जो कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं वो अब कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, क्या आपने प्रोसेस किया, उनकी हमें केस स्टडीज भेजिए, सक्सेस स्टोरीज भेजिए, अच्छे फोटोग्राफ्स भेजिए, एक लाइवली डिस्कशन कीजिए. बिकॉज हर दिन वहाँ कोई अगर ट्रेनिंग के लिए आता है, कोई अपना प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए आता है, कोई अपना एंटरप्राइज को और कुछ अपना कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए आ रहा है. दे आर ऑल स्मॉल स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. तो वो उन सबको डॉक्यूमेंट करना और उनको बताना बहुत जरूरी है. तो वन एग्जाम्पल इज दिस. इसके अलावा जो हमारे क्रेडिट लिंक सब्सिडी के जो बेनिफिशरीज हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जो हमारे बेनिफिशरीज हैं, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज शेयर द गुड स्टोरीज. एंड ना सिर्फ शेयर करना है, उनको मोटिवेट करना है, उनको हमें एनकरेज करना है. So that by the time we meet in August for our conclave, I think we have many more achievements to be proud of in the scheme. तो ये कुछ बातें थी जो कि मैं आप सबसे कहना चाह रहा था. And I request, I wish that we have very good discussion today, और we hope that हम ऐसे ये webinars continue करते रहेंगे. आपके सजेशन भी दीजिए कि आप क्या टॉपिक चाहेंगे, उसको कंसिडर करके जो पब्लिक डिमांड होगी हम वैसे भी इसको क्यूरेट करने की कोशिश करेंगे. So with these, I'd like to close my remarks, and I once again thank my NPMU team in Delhi and PMU at NIFTEM-Kundli for their support, and I wish the very best to the program today. Thank you. थैंक यू सो मच सर. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके अत्यंत प्रेरणादायक, दूरदर्शी एवं मार्गदर्शक विचारों के लिए. निश्चित रूप से उपस्थित सभी लोगों के लिए आपके साथ प्रेरणा का स्रोत बनेंगे. मैं आपका एक बार सबकी तरफ से पुनः आभार प्रकट करता हूं सर, सब समस्त टीम की तरफ से. धन्यवाद सर. Thank you very much, Shri Devesh Deval ji, for the nice orientation, setting the context
And participants, I've seen that the responses in chat box, and there are requests that English. There are a few requests. Rest assured that we have taken care, and we have this information in mind that we having pan-India people and conversation solely in Hindi. We will not be doing so. Even the speakers, they'll be bilingual, and primarily they would be addressing you in English. So, so that part we have taken care, and I hope that very simple Hindi, if at all to be used, would be used. And thank you very much once again for JS sir for nice context setting, and it would be easy for DRPs to take the kind of lessons, the kind of learnings which this webinar is aiming to impart. As indicated by Shri Devesh Deval ji, that the ministry wants that the kind of DPRs which are submitted, on which DRPs are helping the potential entrepreneurs or the entrepreneurs, existing entrepreneurs. We want to see that innovation in terms of either products or the new technologies, they has to be in. There are two parts in DPR. So part A and part B, where financial part B largely covers, and part A which focuses on the technical side of it. And bank definitely evaluate both the parts. So if there would be a good merit in the part A, which largely dominated by the technical input. So उस technical input वाले portion में भी हमें DRPs से चाहिए कि that they should kind of attention to it. और जो आज की webinar या further series of webinars जिस area से entrepreneur हो, whatever the areas they are selecting or they are thinking for specific requirements. So that has to be put forward. And context is very well said already. So whatever is planned for this session, I wanted that we will expose you at the end the kind of facilities if DRPs or the any potential entrepreneurs, because this today we have the audience, both the DRP, they are certainly largely it is dominated by the DRPs, but we do have potential entrepreneurs or beneficiaries, likely beneficiaries of the PMFME as an audience today. So we'll let you know that the kind of technologies which we are discussing today, and if you अगर आपको वो देखना है, if you want to feel them, एक देख के आपको ज्यादा समझ में आए, then how the both the NIFTEMs which are having the PMUs under NIFTEM of this PMFME scheme, they can really help you. So I'll give the details once we will hear the speakers. Arvind ji, I hope that our next speaker is ready and in line. Yes, sir. Can you confirm? Yes, sir. Yes, sir. So that's all from my side for now, and over to you. थैंक यू सो मच सर, आपके प्रेरणादायक शब्दों के लिए। मैं इस अत्यधिक समय ना लेते हुए अपने पहले स्पीकर श्री देवेंद्र सर, आप जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। सर आप अपना वक्तव्य शुरू कर दें, मैं आपका एक छोटा सा परिचय दे दूं। सभी प्रतिभागियों को मैं बता देता हूं, श्री देवेंद्र नैने जी, GM हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड, आज हमको वैक्यूम ड्राइंग टेक्नोलॉजीज फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बेस्ड स्नैक्स पर व्याख्यान देंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वेबिनार श्रृंखला में। So good morning all, and thank you for giving me the opportunity for speaking in the webinar. And I thank on behalf of myself and my organization Haldiram Snack Foods Private Limited, which is located at Nagpur and Noida, and I am representing for the quality production at Haldiram Nagpur. So thank you very much. So today's topic is vacuum drying technologies for fruit and vegetable based snacks. So vacuum drying is actually an advanced dehydration technology which is widely used for high quality fruit and vegetable snacks. So these snacks can be these products can be used as a dehydrated ingredients or directly the produce which are there, like dehydrated apple or dehydrated mango or things like that. So what is vacuum technology? So vacuum technology is it operates under reduced pressure. So it allows the removal of moisture at low temperature, and which helps in preserving color, flavor, texture, and the nutrients. So what is the science behind vacuum drying? So vacuum drying actually क्या होता है कि there is a lowering of atmospheric temperature inside the chamber. तो चेम्बर के अंदर में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये काफी कम किया जाता है, which is why the boiling point of water, which is normally at 100 degrees Celsius,
it reduces considerably at a low temperature. So which helps in evaporating of the water below 100 degrees Celsius. अगर पानी 100 डिग्री से कम में अगर इवेपोरेट होता है तो what it indicates that इसमें हीट ट्रांसफर इफिशिएंसी अपने को मिलेगी और वैक्यूम ड्रायर की वजह से जो प्रोडक्ट जिसको हमको डिहाइड्रेट करना है उस whatever the sensitive compounds which are there which will be protected, which includes the vitamins, minerals or phytonutrients which are present in fruit and vegetable. A schematic diagram of vacuum dryer I have shown. So in which there is a steam inlet and pressure reduction is there, and water evaporation and condenser vacuum pumps are there. So what is the principle of vacuum drying? So water boils at the lower temperature under vacuum. So that is why the typical drying temperature can be between 30 to 50 degrees Celsius. Whereas in normal dryers like tray dryer or oven dryer or other type of dryers, this temperature goes above 110 degrees Celsius. So this helps in also reducing the oxygen level, and oxidation also comes down, and heat is mainly supplied with the help of conduction techniques. So इसमें आउटकम जो हमको फायदा जो होता है, आउटकम जो होता है, इसमें क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट रिटेंशन, न्यूट्रिएंट पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज फ्रूट एंड वेजिटेबल इज रिटेन्ड. देयर इज अ मिनिमल श्रिंकेज एंड डिस्कलरेशन. वी गेट एनहांस्ड फ्लेवर एंड एरोमा. और जब आप रिहाइड्रेट करते हो तो ये सब चीजें आपको काफी इजीली प्रोडक्ट में ट्रांसफर हो जाती हैं. So what are major vacuum drying technologies? So the major vacuum drying technologies is vacuum tray drying. This is basically batch process. It is mainly suitable for mango, apple, mushrooms. The advantages are high quality retention and controlled drying is possible in vacuum tray drying. The limitations is that it is a slow process and the equipment cost is very high. Then second is vacuum freeze drying, lyophilization. So it is the most advanced method. The process step include freezing, then vacuum sublimation and secondary drying. Ice converts directly into the vapor. So advantages are best nutrient retention, original structure is maintained, product is crispy, porous and snacky. Applications are strawberry, blueberry snack, instant soup vegetable. Only thing is the equipment cost is very, very high. Microwave vacuum drying. It combines microwave heating as well as vacuum. So internal heating of water molecule is there. The advantages are the drying is very fast and texture is best in this thing, which is for the puffed product. Applications are like fruit chips, which can be banana or jackfruit chips, which can be produced. Then other technique is vacuum frying. So frying is carried out under reduced pressure. So low temperature frying is there at 120-130 degrees, whereas normal frying is around 140 to 180 degrees. So it helps in lower oil absorption, better color retention, and reduced acrylamide formation. So this can be applied in potato chips, sweet potato chips, and banana chips. Advanced hybrid technologies. It used vacuum drying as well as microwave vacuum drying, radio frequency. And benefits are faster drying, energy efficiency, improved product structure. So this is a comparative chart of all the four techniques which I had shown. And this shows that the vacuum tray drying is given at a low temperature and the quality is high, but the best is the freeze drying in terms of the temperature, quality, and only disadvantage is it is having a high cost. What are the benefits of vacuum drying? So benefits are nutrition retention, preserves vitamins, all the vitamins, especially vitamin C. It imparts better color and flavor to the products. Improved texture is there. There is a low temperature processing, extended shelf life, because at low moisture the shelf life can be extended. Oil usage can be reduced if you are using the vacuum frying. So oil pickup will be less and healthier snacks can be produced. High product quality. The product will be having a premium look, taste and aroma, energy efficient and cost efficiency. Lower energy consumption over the time. Initial cost is higher, but as you go, the cost per kg reduces. So industrial applications can be in the snack industries, fruit and vegetable chips, ready-to-eat foods like instant soup, ingredients which are used in instant soup and meal mixes. Dairy industries, milk powder and coffee creamers can be produced by vacuum technologies.
herb and spices processing, retention, aroma and active compounds can be retained. It can be used in pharmaceutical industries, nutraceutical and export-oriented products which are having high quality dehydrated food for global market. Also, this can be vacuum drying can be used for home use when we are drying fruit and vegetable. This method allows for to use seasonal produce year the end. मतलब जैसा मैंगो है, अगर मैंगो हम लोग अभी के सीजन में डिहाइड्रेट करके रखते हैं तो इसको रिहाइड्रेट करके हम लोग बाद में इसको यूज कर सकते हैं. Commercial use में vacuum drying is used to produce variety of products from dehydrated fruits, vegetable to instant soups and snacks. The ability to maintain food quality and extend shelf life makes vacuum drying an attractive choice. What are the benefits? So it is energy efficiency is higher. It operates at the lower temperature. Faster drying होता है vacuum की वजह से. Very less energy is required to achieve desired moisture level. Minimizes thermal losses and product damage. It is more environmental friendly and provides cost saving over a longer term. Low energy efficient use reduces energy consumption. It is therefore it is environmental friendly as we can give a lower carbon footprint and again cost saving on a long term basis, not on the initial basis, but on a long term it is a cost saving. What are tips for successfully using vacuum drying? We should use fresh and uniform raw material, avoid overripe or damaged raw material, maintain proper slice thickness, apply pre-treatments, blanching and anti-browning, control vacuum level and temperature. So successful vacuum drying, we have to have pre-treatments like blanching, anti-browning, control vacuum level, which should be between 50 to 200 bar and temperature 30 to 60. Uniform tray loading should be there and heat distribution should be uniform. Final moisture should be monitored continuously. No air leakages should be there to prevent oxidation or color loss. Strict hygiene and equipment maintenance should be there. Moisture proof packaging should be there for longer shelf life and cool properly before packing to avoid moisture retention. So advantages and limitations are of the vacuum drying are low temperature drying. It is there to which helps in preserve nutrient and flavor, which helps in better color retention, improved texture and longer shelf life. Limitations are higher investment cost as it is a batch process, lower capacity. It requires skilled operations and maintenance and longer drying time in some method like tray drying. I am concluding the talk by saying that vacuum drying technologies are essential for premium snack production, where quality, nutrition and sensory attributes are critical. Among all the methods, freeze drying is the best quality, while vacuum frying and vacuum drying are preferred for commercial snack manufacturing. Thank you. दिव्यांग जी, एक रिक्वेस्ट कुछ है फीडबैक्स फ्रॉम द ऑडियंस साइड कि अगर थोड़ा सा अगर ये भी दें इन टेक्नोलॉजीज में से फॉर एग्जांपल अगर उनको प्लांट मशीनरी चाहिए, सोर्सिंग, सम ऑफ द ब्रांड लीडर्स और द काइंड ऑफ साइज, व्हाटएवर इंफॉर्मेशन जो आपके पास पॉसिबल हो, रेडी हो, तो वो क्योंकि ये टेक्नोलॉजीज आर सर्टेनली न्यू. मेनी ऑफ अवर DRPs आर द ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस टुडे, दे आर नॉट अवेयर अबाउट these technologies and particularly the plant machinery so that they can include it into the upcoming plant in their DPRs. थोड़ा सा इसका ये कि कहाँ से किस टेक्नोलॉजी से इंडियन मेक अवेलेबल है वर्सेस हमें इसमें इंपोर्ट करना पड़ता है या कुछ थोड़ा सा ओरिएंटेशन. मैक्सिमम इंडियन मेक अवेलेबल है. आप बॉम्बे या पूना में कुछ इंडस्ट्रीज है जैसे वैक्यूम ड्राइंग टेक्नोलॉजी इंडिया LLP करके है, जिनकी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, वैक्यूम ड्राइंग टेक्नोलॉजीज LLP इंडिया. तो इनकी साइट पे आप जाके चेक कर सकते हैं. ये मुंबई बेस्ड है, इनका लिंक्डइन में भी है और लाइबोल्ड करके है जो वैक्यूम ड्राइंग मशीनरीज भी बनाते हैं, बट दैट इज ए इटालियन कंपनी. शेयरिंग इन द ग्रुप. नैनी जी, आप उसको जो डिटेल्स हैं इफ यू कैन शेयर, आपका प्रेजेंटेशन हो गया प्लीज. आफ्टरवर्ड्स आई कैन शेयर विद गरिमा एंड शी कैन सर्कुलेट दैट. जी सर. अच्छा नैनी जी, वन क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड. जो आपने कहा फ्रीज ड्राइंग इज द बेस्ट टेक्नोलॉजी बट एक्सपेंसिव है, कुछ आइडिया है सर कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है फ्रीज ड्राइंग में?
अगर छोटा सर यूनिट इसका लगा आइडिया अभी नहीं है, बट आई विल गेट एन आइडिया एंड आई कैन शेयर दैट. Devesh sir, we have the next speaker who is the manufacturer of freeze dryer in India. So they are one of the brand leaders Okay. Indian make. So I think that can be supplemented by Mr. Shivansh, who is the next speaker. right. Okay. So thank you. I hope the talk was good, and thank you very much for giving me the opportunity. Thanks again. थैंक यू सो मच सर आपके इस उद्बोधन के लिए। थोड़ा तकनीकी दिक्कत रही, पर आशा करता हूं सब लोगों ने सुना होगा और आपकी पीपीटी हमारे पास है। किसी को भी जरूरत होगी हम लोग प्रयास करेंगे कि सबको आपकी पीपीटी पहुंचा दें। आपका पुनः मैं धन्यवाद देता हूं इस वेबिनार श्रृंखला में बोलने के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समय नष्ट न करते हुए श्री शिवांश ओनाराव जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना व्याख्यान शुरू करें। श्री शिवांश ओनाराव जी टेक्निकल डायरेक्टर एंड सीईओ हैं फ्रीज ड्राइंग सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, और आज वो नोवल प्रोसेसिंग टेक्निक फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल और फ्रीज ड्राइंग पर हम लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। श्री शिवांश ओनाराव जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर, आपकी स्क्रीन विजिबल है। प्लीज सर कंटिन्यू सर। ओके, आज का टॉपिक जैसा डिस्कस किया गया था, नोवेल प्रोसेसिंग टेक्निक्स फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मेरा मेन फोकस जो रहेगा वो फ्रीज ड्राइंग पे रहेगा। अभी इस समय आप जब इंडिया को इंडिया इस टाइम पे अराउंड 300 मिलियन टन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एवरी ईयर प्रोड्यूस कर रहा है। बट इस टाइम पे जब भी डिस्ट्रेस सेलिंग होता है, जो टमेटोज है उसको आप 1 रुपए किलो 2 रुपए किलो के भाव पे आप बेचना चाह रहे हो। इस क्वेश्चन का आंसर, इस प्रॉब्लम का आंसर प्रोडक्शन नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर है वैल्यू रिटेंशन। इस टाइम पे इंडिया में वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन होने के बावजूद वैल्यू रिटेंशन का इशू है। आज मैं आपको इसी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन, जिसका वैल्यू रिटेंशन जिससे हो सकता है, उस गैप को एड्रेस करने के लिए आया हूं, जिसका टेक्नोलॉजिकल रीजनिंग इज फ्रीज ड्राइंग। ये एक कोई नीश या बहुत एक्सपेंसिव मशीन नहीं है। इट इज अ वेरी प्रैक्टिकल एंड स्केलेबल टूल व्हेन इट कम्स टू वैल्यू एडिशन। ये प्रॉब्लम और साइंस दोनों को कवर करते हुए एक बिजनेस केस एंड एक रियल इम्प्लीमेंटेशन पाथ है। हम पहले शुरू करेंगे व्हाट इज फ्रीज ड्राइंग। इंडिया इज, अगेन जैसे मैंने आपको कहा, इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब फ्रीज ड्राइंग का टेक्निकल नेम इज लाइफलाइजेशन, बट द कॉन्सेप्ट इज एक्चुअली वेरी सिंपल। आपका पहले प्रोडक्ट का होता है फ्रीजिंग, विच इज अराउंड -40 से लेकर -25 डिग्री के बीच में आपका फ्रीजिंग होगा। उसके बाद में यू क्रिएट अ वैक्यूम प्रेशर, आप एक नेगेटिव प्रेशर में जाते हो, आप एक वैक्यूम एनवायरमेंट बनाते हो, एंड देन यू जेंटली अप्लाई हीट टू द प्रोडक्ट। इसके वजह से जो प्रेशर लेवल जो इतना नीचे है, उस वजह से आपका जो आइस है दैट डजंट मेल्ट इनटू वाटर, इट बेसिकली सब्लिमेट्स। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन इज बेसिकली सॉलिड से गैसियस फॉर्म में जाना, बाईपासिंग द लिक्विड फेज, उसको सब्लिमेशन कहते हैं। अब सब्लिमेशन के वजह से चेंज क्या आता है? आप जब भी किसी फ्रोजन प्रोडक्ट को हीट देते हो, वो सबसे पहले लिक्विड फॉर्म में जाता है और फिर गैस फॉर्म में जाता है। अब इस लिक्विड टू गैस में जाने की वजह से आपका जो प्रोडक्ट का सेल वॉल होता है वो कोलैप्स हो जाता है, आपका जो न्यूट्रिएंट होता है वो एस्केप हो जाता है, आपके खाने का कलर चेंज हो जाता है, टेक्सचर ब्रेक डाउन हो जाता है। आप जब फ्रीज ड्राइंग की बात करते हो, इनमें से कोई भी चीज नहीं होती है। बिकॉज सब्लिमेशन हो रहा है, द स्ट्रक्चर रिमेन्स प्रिजर्व, the moisture leaves as vapor which is in the gaseous form, leaving the cell walls intact, सारे nutrients locked in रहते हैं, and जो product looking and the tasting is almost exactly the same as it did when it was fresh. जो आपका end freeze dried product रहता है, that is a product with a final moisture content of less than 4%. इसका मतलब ये हुआ कि वो प्रोडक्ट शेल्फ स्टेबल भी हुआ, लाइट वेट भी है, और क्वालिटी इज एसेंशियली मच एंड फार ग्रेटर देन एनी अदर टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट। अब इस टेक्नोलॉजी को यूनिक क्या बनाता है? लेट्स टॉक अबाउट दिस इन प्रैक्टिकल टर्म्स। व्हेन यू टॉक अबाउट
there are several studies जिन्होंने बहुत clearly showcase किया हुआ है कि आपका जो न्यूट्रिशनल रिटेंशन रहता है किसी भी प्रोडक्ट में, इट इज ऑलमोस्ट 95 to 98%, इंक्लूडिंग ऑल द हीट सेंसिटिव विटामिन्स लाइक विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जो दूसरे कन्वेंशनल डाइंग टेक्नोलॉजीज में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. आपका प्रोडक्ट का श्रिंकेज इज एज क्लोज टू नथिंग. कोई टाइप का श्रिंकेज नहीं होगा. देयर इज नो चेंज इन शेप ऑफ द प्रोडक्ट. जो प्रोडक्ट में एक पोरस स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, इट विल गिव यू एन एक्सीलेंट रिहाइड्रेशन रेशियो. आपका जब फाइनल प्रोडक्ट बाहर आता है, आप हो सकता है आपको रिहाइड्रेट करना होगा. उसमें जो एक पोरोसिटी की जरूरत पड़ती है, इट इज एक्सीलेंट इन फ्रीज ड्राइड प्रोडक्ट्स. Products can recover almost 90% of their original form and texture just by adding water. क्योंकि आपके प्रोडक्ट में से सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चर बाहर निकला है, the rehydration is all about adding water and nothing else. ये एक 100% नेचुरल टेक्नोलॉजी है जिसमें आपका कलर, आपका न्यूट्रिएंट, आपका फ्लेवर, आपका टेक्सचर सब कुछ इंटैक्ट रहता है. अब इसी टेक्नोलॉजी को इफ यू लुक एट इट एट अ कंज्यूमर स्टैंड पॉइंट, इट इज एब्सोल्युटली ह्यूज. Clean label products, there is no added preservatives, no artificial corrections. That's what the modern market, the buyer is demanding. Freeze drying delivers this not just naturally but through formulation as well. And अगर आप इसी चीज को एक बिजनेस स्टैंड पॉइंट से देखते हो, यही प्रोडक्ट rehydrates beautifully, looks like fresh, carries no cold chain requirement, which is a fundamentally different commercial proposition than any dried chip or a powder. So we are not just removing water, we are preserving the identity of the product. अभी आप जब फ्रीज ड्राइंग को दूसरे टेक्नोलॉजीज के साथ में कंपेयर करते हो सकता है स्प्रे ड्राइंग हो गया, सन ड्राइंग हो गया, हॉट एयर ड्राइंग हो गया, उनको मैंने 3-4 इसमें किया हुआ है. When you talk about spray drying, the cost is very low, no doubt, but it is uncontrolled. Contamination हो सकता है, weather reliability is a very big issue, and microbiological spoilage and risk is also very big. आप कोई भी प्रीमियम प्रोडक्ट या प्रीमियम सेगमेंट में जाना चाहोगे, it is not anything but premium. It is very simple and not viable at all. When you talk about hot air drying comparatively is much more controlled and scalable, but hot air drying में you have issues like hard texture, shrinkage होता है, and significant nutrient loss hota hai. The product is definitely cheaper to make, and it shows why. Now, when you talk about frozen products, the quality is very high, but you need a continuous cold chain from the factory to the consumer's freezer. This leads to expensive logistics. No one can break in the chain, which compromises everything. अब आप जब freeze drying पे आते हो, freeze drying sits in a different position entirely. High quality, comparable to frozen. कोई cold chain का requirement नहीं है. Shelf life is almost 12 to maybe 48 months, or sometimes more. When you talk about fruits and vegetables, the shelf life can be in years easily. The weight is extremely lightweight and it is export friendly as well. इस time पे it is not about competing with sun drying on cost. It's about competing with frozen on quality and winning on logistics. इसी रीजन से फ्रीज ड्राइड प्रोडक्ट जो है वो स्पेस मिशंस, मिलिट्री राशंस एंड हाई एंड ग्लोबल फूड ब्रांड्स में यूज होता है. इट इज नॉट जस्ट अ गिमिक. Now talking about the applications. Coming to applications, we can start with fruits. Freeze-dried fruits are one of the fastest growing segments globally. Demand is driven by people and consumers and the market, which is looking for healthy, clean label snacking options, which is almost everybody at this point. आपको ये granola bars, cereals, premium dairy products as ingredients, Greek yogurt, इन सब में आपको confectionery and bakery, इन सब में आपको freeze dried fruits का इस्तेमाल होते हुए बहुत अच्छे से दिखेगा. अब आप एक इंडिया के पर्सपेक्टिव से आप जब इस चीज को देखोगे, मैंगो की अगर बात करें, it is alone a massive global brand. Same with banana, आमला हो गया, different types of Indian berries like जामुन and strawberry. ये सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनका डिमांड डोमेस्टिक एंड स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट पुल के साथ आता है. एंड फ्रीज ड्राइंग दीज fits very well in the market. The products are lightweight.
value per kilo of dehydrated or maybe freeze-dried fruits is extremely high. And the most important part is for the transportation and logistics, you don't require cold chain anywhere in the supply chain once the product is processed. This combination makes it highly attractive for both e-commerce as well as export markets. Now talking about vegetables, for vegetables, the use case shifts slightly towards functionality and not just convenience. The biggest demand here comes from the ready-to-cook mixes, instant soups, noodle inclusions, and institutional or even horeca supply at this point. अब आप इस चीज को ऐसे इमेजिन कर सकते हो, थिंक अबाउट इट एज अ होटल और मे बी अ क्लाउड किचन. इसको इन द फॉर्म ऑफ इंग्रेडिएंट देख सकते हो. कंसिस्टेंसी है, देयर इज नो स्पॉइलेज, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रेप टाइम एंड स्टैंडर्डाइज्ड क्वालिटी अक्रॉस बैचेस. इस टाइम पे व्हेन यू टॉक अबाउट वेजिटेबल्स, बीट टमेटोज, बीट अनियंस, द रॉ मटेरियल कॉस्ट इज एक्सट्रीमली फ्लक्चुएटिंग. आज हो सकता है 10 रुपए है तो 6 महीने बाद में हो सकता है 100 रुपए किलो होगा. इस इशू को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकता है व्हेन इट कम्स टू फ्रीज ड्राइंग. अब ग्लोबली vegetables, freeze dried vegetables is a very mature market. Freeze dried vegetables are used widely in instant noodles, packaged soups, emergency food. A real life example again जो बहुत commonly आपको दिखता है, even Maggi masalas, all of these are still currently using freeze dried vegetables and there is no substitute for it. In India, we are still at a very early stage in adoption, which means if you're thinking about this space now, we are ahead of the curve, if not late. अब इसका दूसरा एक एप्लीकेशन जो है, it is complete meals. Now this is where things get very interesting. When it comes to freeze drying, we are not just talking about individual ingredients, we are also talking about complete ready to eat meals. That is dal, rice dishes, curries, which can be freeze dried in their finished form. Iski shelf life is more than an year to almost 2 years. Rehydration is not more than 5 to 8 minutes with hot water, and it is absolutely clean. Clean label ingredient, nothing is added. This can be useful for any defense personnel, travelers, urban professionals जिनके पास में इस टाइम पे cooking का time नहीं है, NRI households, and globally this is a mature category. In India, it is still at the beginning. अब आप जब business potential की बात करते हो, the very important question is, does the business actually work? And the clear and the most honest answer is yes, but it is selective. Freeze drying बहुत अच्छा काम करता है, it works very well. Value addition can be almost 3 to 10 times depending on what the product is and how it is positioned. A kilo of freeze dried fresh mango sells for a fraction. Sorry, a kilo of fresh mango will sell for a fraction of what a kilo of freeze dried mango powder sells for in retail and even more in export. This is where the economy works best when you are. You're working with surplus or perishable produce where the raw material cost is low. You can target premium retail, export or institutional buyers, and you're running at reasonable scale and utilization. It is not the right technology for every product or every market, but for the right product in the right hands, it can transform the economics of farming. And अब ये मैंने कुछ different business models है जिसके ऊपर आप, when you are starting with freeze drying, you can start with, given the capital investment involved, the business model you can choose from can be centralized processing units, which can serve multiple stakeholders in a cluster. Most capital efficient हो जाएगा when it comes to raw material and customers. Second is job working, where brands and aggregators outsource processing to you. It is a low risk, steady revenue with a lower upside. Private labeling, you can process, supply under someone else's brand. And the last is own brand. Maximum value capture hoga, but requires building distribution and consumer trust. For anyone working with
PMFME, the most practical entry point is cluster-based shared infrastructure with job work to start. इससे आपका investment एक तरीके से de-risk होगा. You build an operational expertise and move towards your own brand as you establish market relationships. अब challenges and realities. I will be very transparent about the challenges, because anyone who doesn't mention them is selling you something. Firstly, the capital cost is significant. A commercial freeze drying is a very serious investment, and ये एक real barrier बनाता है for individual micro enterprises. Second of all, the energy consumption is again very high. The vacuum and the refrigeration systems, which are basically the heart of the machine, continuously work karte hai, which shows up on your operating cost. Third is the raw material consistency. The output quality is as good as the input. Sorted, graded, food safe produce is non-negotiable when it comes to freeze drying. अब एक जो लास्ट चैलेंज है, ये बहुत जगह पे मेंशन नहीं होता है, बट इट इज समथिंग बेस्ड ऑन द आउटपुट. आपका जो प्रोडक्ट है, इट विल हैव अ वेरी ब्यूटीफुल आउटपुट, बट द मार्केट इज इन देयर येट एट अ प्राइस दैट मेक्स सेंस. ये एक टेक्नोलॉजी फेलियर नहीं है, दैट्स अ मार्केट फिट फेलियर. एंड ये कई बार होता है व्हेन यू स्किप द फीजिबिलिटी प्लानिंग. सो मैंने आपको ये जो भी challenges बताए हैं, they are not deal breakers, they are just very real, and they need to be part of every conversation before a unit is set up. Now, when you look at the future outlook, globally the freeze-dried food market is on a clear growth trajectory, driven by a clean label demand, premiumization, the growth of e-com websites, and increasing appetite for convenience food, जो बिल्कुल भी quality पे sacrifice नहीं करता है. India has a structural advantage here that most countries don't. It has the agricultural diversity. We almost grow everything. The scale of production, which is amongst the highest in the world. Competitive processing costs. If we invest in the right infrastructure, a export market hungry for authentic Indian products in its preserved form. The global opportunity is real, but it won't come to us. हमें उनके पास जाना पड़ेगा, through investment in processing, quality standards, and in market developing. So freeze drying again is the most affordable, might not be the most affordable technology in the room, but it is the most transformative one, not for the right application. It is going to reduce post-harvest losses. It elevates product quality to global standards. It opens domestic and export markets. Conventional processing, जो simply access नहीं कर पा रहा है. And it fits the PMFME vision of turning agricultural surplus into economic value at the cluster level, at the enterprise level, and ultimately at the national level. So, इस session से the question is no longer whether freeze drying is viable in India. The question is which products, which model, and which market we start with. I hope this session has answered most of these questions. I'm happy to take questions now. Thank you. थैंक यू सो मच सर. फ्रीज ड्राइंग तकनीक के क्षेत्र में आपका योगदान बहुत उल्लेखनीय है, और आपने जिस प्रकार से अपना उद्बोधन दिया, आप आशा करता हूं सभी डीआरपी ने बड़े ध्यान से सुना होगा और सभी उपस्थित लोगों ने. मैं आपका पुनः धन्यवाद देता हूं मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग और निफ्टम कुंडली की तरफ से. थैंक यू सो मच सर. Arvind ji, Sir. Arvind ji, सर, we'll just take few questions here because Yes. this is very important technology. मैं इसी पे आ रहा था सर. मैं इसी पे आ रहा था सर, और मैं सभी उपस्थित प्रतिभागियों से अनुरोध करूंगा कि अगर इस सब्जेक्ट से संबंधित कोई सवाल आपके हैं तो आप चैट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और अपना हैंड भी रेज कर सकते हैं. हम आपका एक 1 by 1 सवाल लेंगे. धन्यवाद. श्री शिवांश जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा. श्री
धीरवत हरिलाल जी पूछ रहे हैं मार्केट स्ट्रेटेजी फॉर ड्रायर प्रोडक्ट्स। जी सर, मैंने आपको इसी पीपीटी में आपको जैसे बताया मार्केट स्ट्रेटजी। इस टाइम पे आप कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हो गया, न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हो गए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हो गए, ये तीनों चारों इंडस्ट्रीज जो है, ये तीनों चारों इंडस्ट्रीज ऐसी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ फ्रीज ड्राइड इंग्रेडिएंट्स ही यूज हो सकते हैं, बिकॉज इन तीनों इंडस्ट्रीज में आपका प्रोडक्ट का न्यूट्रिशनल कंपोनेंट सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो मार्केट स्ट्रेटजी एक ये हो सकती है। Hello? Like for micro enterprise setup, exactly what is the cost investment scenario? That is very important. Like how our DRP has to interact with the prospective entrepreneurs. नहीं सर, आई एम नॉट एबल टू हियर यू प्रॉपर्ली। So micro enterprise point of view, exactly Yes. what technologies you are suggesting, and if our DRPs are interacting with the entrepreneurs, तो वो लोग किस तरह से उन्हें बताया क्या एट मैक्रो लेवल जो है आपकी टेक्नोलॉजी की कॉस्ट क्या आएगी, एक तो कैपिटल कॉस्ट क्या आएगी, ऑपरेशनल कॉस्ट क्या आएगी, इसकी एएमसी की क्या इश्यूज हैं, एंड प्रोडक्ट यू मे बी टारगेटिंग क्या इन ये प्रोडक्ट जो है हमारे माइक्रो एंटरप्राइज के लिए बेहतर होंगे। थोड़ा इसके सर, आप जब माइक्रो एंटरप्राइजेस की बात करते हो उस टाइम पे एक स्मॉल स्केल सेटअप विच इज स्केलेबल, उसका एक अगर आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करोगे दैट विल बी रफली अराउंड, आप कह सकते हो 60-65 लाख तक का कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जिसमें आपका मशीन, आपकी जगह, आपके डिफरेंट प्री प्रोसेसिंग इक्विपमेंट सारे इंक्लूड होंगे। आप जब ऑपरेशनल कॉस्ट की बात करते हो तो इसमें ऑपरेशनल कॉस्ट आपका पर केजी ऑफ इनपुट पे हम देखते हैं कि 1 किलो ऑफ, लेट्स से आप मैंगो कर रहे हो तो 1 केजी ऑफ मैंगो, व्हेन यू प्रोसेस 1 केजी ऑफ मैंगो, उसका आपका एक जो भी कॉस्टिंग आएगा वो रफली आएगा अराउंड 35 to 40 रुपीज अ केजी। ठीक है, अब इसी चीज को व्हेन यू आर सेलिंग इन द मार्केट, इस टाइम पे जो रेट्स मार्केट में आते हैं फॉर 1 केजी ऑफ डिहाइड्रेटेड मैंगो, फ्रीज ड्राइड मैंगो, इज रफली 2000 to 2200 रुपीज अ केजी। उसी जगह पे आप जब इसका ऑपरेशनल कॉस्ट में से आपका जो एक सेलिंग कॉस्ट जो बनता है दैट इज नो मोर देन अराउंड आई वुड से 1200 to 1500 रुपीज अ केजी, आपको जो कॉस्टिंग पड़ेगा, और सेलिंग प्राइस जो होगा वो अराउंड 2000 to 2200 रुपीज पड़ता है। any question from DRPs please? श्री राकेश प्रियदर्शी जी का कोई सवाल है, उन्होंने अपना हाथ उठाया। राकेश जी अपना सवाल पूछिए सर। श्री राकेश प्रियदर्शी जी। Arvind ji, we can take questions in the text box. Sir. We should, because we have very limited time available. सर हेलो सर, Yes, मैं hello. राकेश प्रियदर्शी सर डीआरपी बोल रहा हूँ और मैं गया बिहार से हूँ। Okay. मेरा सवाल सर एक देवेंद्र सर या शिवांश सर से भी यही है कि डिहाइड्रेटेड जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का हम लोग करते हैं, चाहे वैक्यूम ड्राई के माध्यम से चाहे फ्रीज ड्राई के माध्यम से, तो उसमें क्या होता है डिसएडवांटेज ये कि जो भी माइक्रोब्स हैं या पेस्टिसाइड हैं या जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन टाइप पर जो चीज़ें हैं कंटेमिनेटेड जो फ्रूट्स या वेजिटेबल में, उसको हम डिहाइड्रेटेड करने के दौरान हम कैसे उसको कंट्रोल करेंगे या उसको किल करेंगे, क्योंकि वो तो सारा चीज़ डिहाइड्रेट हो जाएगा वो उसके साथ भी। तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए कोई बिफोर कोई ऐसा कोई प्रोसेस है या फिर ऐसा इक्विपमेंट जो दोनों चीजों को एक साथ ट्रीटमेंट कर ले और डिहाइड्रेट कर दे? नहीं सर, आप जब भी फ्रीज ड्राइंग या इवन वैक्यूम ड्राइंग की बात करते हो, ये दोनों टेक्नोलॉजी सर प्रिजर्विंग टेक्नोलॉजीज है। इसमें आपका माइक्रोबियल कंटामिनेशन जो है वो
किल नहीं होता है, वो एक तरीके से डोरमेंट स्टेज में चला जाता है। अब जैसे मेरे पहले जो स्पीकर थे उन्होंने भी कहा था कि आप आपके प्री प्रोसेसिंग पार्ट में आप ब्लांचिंग कर सकते हो या क्लोरिनेशन कर सकते हो, वॉशिंग क्लीनिंग, ये जो चीजें हैं इनसे आपका जो प्री प्रोसेसिंग स्टेज में आपका जो भी माइक्रोबियल कंटामिनेशन है उसको किल करना या उसको रोकने का काम जो होगा वो आपका प्री प्रोसेसिंग में होता है। आपका जो टेक्नोलॉजी में आपका जो प्रोसेसिंग पार्ट में जो होता है उसमें आपके गुड बैक्टीरिया हो गया या न्यूट्रिएंट्स हो गए उनको प्रिजर्व करने के बारे में फ्रीज ड्राइंग और वैक्यूम ड्राइंग है। तो आप जब भी माइक्रोबियल कंटेमिनेशन को रोकना या खत्म करने की बात करते हो तो वो सारी चीजें आपकी प्री प्रोसेसिंग में होगी। उसमें आप ब्लांचिंग कर सकते हो, क्लोरिनेशन हो गया, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। धन्यवाद राकेश जी। अगला सवाल एक साई श्रीनिवास जी का है, कैन वी मेक दिस फ्रीज ड्राइंग टेक्नोलॉजी वाइबल एट माइक्रो स्केल एंटरप्राइजेस विद मिनिमल इन्वेस्टमेंट? इफ सो प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन दिस सर। अगेन इसमें सर हाँ आप बिल्कुल कर सकते हो, बट इस टाइम पे आपका मैंने आपको जैसे 3 एप्लीकेशंस बताए थे मेजर, फ्रूट्स, वेजिटेबल, बात थी। फ्रूट वेजिटेबल्स वाइड स्प्रेड हो चुका है, बहुत जगह बना हुआ है, और जो भी प्रोसेसर्स है जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में है वो लोग बहुत मैसिव कैपेसिटीज ऑलरेडी लेके बैठे हुए हैं। आप जब माइक्रो स्केल इंडस्ट्रीज या माइक्रो इन्वेस्टमेंट के साथ में इस बिजनेस में आना चाहते हो, उस टाइम पे हम आपको यूजुअली सजेस्ट करते हैं कि आप या तो खुद के ब्रांड पे जाने का फोकस करें इन द रेडी टू ईट सेगमेंट, बिकॉज रेडी टू ईट सेगमेंट ऐसा है वो इस टाइम पे कट थ्रोट नहीं है। आप कोई प्राइसिंग एस्पेक्ट पे इतना कट थ्रोट नहीं है। व्हेन यू टॉक अबाउट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स स्पेसिफिकली, द मार्केट इज वेरी कट थ्रोट। बहुत सारे प्लेयर्स ऑलरेडी है, बहुत सारे प्लेयर्स ऑलरेडी आ रहे हैं मार्केट में फ्रीज ड्राइड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स करने के लिए, जो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और इंडिया में भी है। रेडी टू ईट मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो मेच्योर हो रहा है इस टाइम पे। इस रीजन से विथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल मशीन्स, यू कैन स्टिल स्केल अप इन द रेडी टू ईट सेगमेंट। तो रेडी टू ईट सेगमेंट एक बहुत अच्छा सेगमेंट है। इसके अलावा फंक्शनल फूड्स हो गया, नोवेल्टी प्रोडक्ट्स हो गए, बहुत अलग अलग टाइप के फॉर्मुलेशंस हो गए, ये सारे चीज पे आप काम करके आप छोटे स्केल के मशीन के साथ में भी बहुत अच्छा स्केलेबिलिटी ला सकते हैं। सर एक सवाल है, हिमानवी डीआरपी जी हैं हमारे कोई, इन्होंने पूछा है एनी बायबैक गारंटी एग्रीमेंट फॉर दीज ड्राइड प्रोडक्ट्स सर? नहीं सर, इस टाइम पे ये चीजें नहीं है मैम। बाय बैक गारंटी ये तो आपको जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन चेन में होगा वही आपको बताता है। लेकिन एक चीज जो बहुत श्योर होती है वो ये होती है, आपके अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में डील करते हो तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का प्रोड्यूस जो है आफ्टर प्रोसेसिंग उसकी शेल्फ लाइफ इज वेरी 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 इजीली ऑलमोस्ट 15 to 20 years। इस इतने लंबे शेल्फ लाइफ के वजह से आप जिनको भी आपका प्रोडक्ट लेट से आपने बेचने के लिए दिया और वही सेम प्रोडक्ट अगर आप वापस आपके पास में आता है, जो आने के चांसेस बिल्कुल जीरो है, पर अगर वो आता है वो प्रोडक्ट का सेलेबिलिटी का इशू है, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी इज नॉट एन इशू। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में, फ्रीज ड्राइड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में काफी हाई होती है, बट बायबैक ऐसी चीज है जो आपको डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में ही पता चलता है। सर एक कर्नाटक से हमारे पूछ रहे हैं वजीहा जी, सर इट इज एन एक्सपेंसिव टेक्निक in an underdeveloped area, how we will deliver it? Don't you think that the food made by freeze drying are not economically viable? बिल्कुल नहीं सर। फ्रूट्स, फूड, वेजिटेबल, एवरीथिंग इज डेफिनेटली इकोनॉमिकली वायबल। द गवर्नमेंट इज ऑलरेडी पुशिंग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज छोटे जगहों पे जहाँ पे मे बी कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज अ प्रॉब्लम और समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे गवर्नमेंट आपको बहुत सारे स्कीम्स देती है जिसके थ्रू आपको सब्सिडाइज रेट्स पे आप इंडस्ट्री पूरा सेटअप करके यू कैन रन द मशीन्स, एंड द क्लियर एंड द वेरी ऑनेस्ट आंसर इज नो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। इस टाइम पे आप
Amazon हो गया, Flipkart हो गया, सब जगहों पे आपको फ्रीज ड्राइड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड इवन रेडी टू ईट मील्स काफी भारी मात्रा में आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मार्केट नहीं है, यस, हर चीज का मार्केट है, वैसे ही फ्रीज ड्राइंग का ही मार्केट है, और प्रोडक्ट इज 110% इकोनॉमिकली वायबल। सर मैं जितने डीआरपी क्वेश्चन पूछना है, so they are seeking what is the minimum cost and capacity of the equipment which you can provide for a particular product. आप इसे एक प्रोडक्ट एग्जांपल देखिए कि भी इतनी कम से कम कॉस्ट में आपको इतने थ्रूपुट की मशीन इन 1 8 आवर शिफ्ट वी कैन सप्लाई। दैट व्हाट एक्चुअली सब लोग ये पूछना चाह रहे हैं। ये एग्जांपल बता दें आप प्लीज। सर मुझे बीच बीच से आपका आवाज नहीं आ रहा है सर, सो सॉरी। सर किसी भी एक फ्रूट एंड वेज प्रोडक्ट के लिए 8 आवर की शिफ्ट चलानी है तो मिनिमम थ्रूपुट और मिनिमम कॉस्ट पीएनडी क्या होगा, ताकि एक्सट्रपलेट कि हमें किस तरह की प्लांटिंग मशीन में जाना है। मिनिमम थ्रूपुट और मिनिमम कॉस्ट कितनी होगी आपकी फ्रीज ड्राइंग मशीनरी की? फ्रीज ड्राइंग मशीन की? हाँ, दैट इज कैपिटल कॉस्ट। वो मेन उसी के ऊपर मेन डीआरपी फोकस कर रहे हैं ताकि वो अपना प्रोजेक्ट बनाए या किसी को समझा सके। ओके, मिनिमम थ्रूपुट और मिनिमम आउटपुट सर मैंने आपको जैसे बताया 8 आवर्स की शिफ्ट के लिए अगर आप ऑपरेशनल कॉस्ट निकालते हो। नो सर, नॉट ऑपरेशनल कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, वेरी क्लियर। सॉरी, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट? यस, हाँ, जो आपकी इक्विपमेंट रहेगी, टेक्नोलॉजी जो आपकी है, जो प्लांट एंड मशीनरी आप इंस्टॉल करेंगे, उसकी मिनिमम कॉस्ट क्या हो और उसका थ्रूपुट क्या रहेगा, उसकी कैपेसिटी क्या रहेगी। मिनिमम जो स्मॉलेस्ट जो स्मॉलेस्ट कैपेसिटी का मशीन होगा उसका आपका कॉस्टिंग लगभग रहता है 30 लाख रुपीस। उसका आउटपुट रहेगा आप 8 आवर्स में अराउंड 20 kgs ऑफ मटेरियल प्रोसेस कर सकते हैं। जी, थैंक यू। दैट इज 20 kgs इनपुट। व्हाट इज आउटपुट? आउटपुट सर डिपेंड करेगा, वो आपके सॉलिड कंटेंट पे डिपेंड करेगा, बट यूजुअली 20% का सॉलिड आउटपुट। मैंगो लेते हैं तो कितना हो जाता है? 22 to 25% आउटपुट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। Yes, sir. This is really challenge. Arvind ji, we can take the next speaker, please. जी सर, जी सर, थैंक यू सो मच सर फॉर आपके सवाल जवाब के लिए। मैं सभी जितने भी प्रतिभागी हैं उन सभी से अनुरोध कर रहा हूं कि आपके बहुत सारे सवाल हैं और सही हैं, सबके आंसर मिलने चाहिए। थोड़ा समय का अभाव भी है पर प्रयास करेंगे चैट बॉक्स में जितने भी क्वेश्चन हैं हम आपको मेल के थ्रू या उनका जवाब आपको एक सीमित दायरे में आपको दे सकें ताकि आप लोगों के अनुत्तरित ना रह जाएं सवाल। दूसरा, मैं सभी को एक चीज और बता दूं कि इस वेबिनार का की जो रिकॉर्डिंग्स है वो 1-2 सप्ताह बाद हमारे YouTube पेज पर मिलेगी ताकि जो लोग किसी कारणवश ज्वाइन नहीं कर पाए हैं वो लोग इसको देख सकें। सर मैं आगे बढ़ता हूं। अब हमारे अगले वक्ता हैं वो श्री राम प्रताप सिंह जी ही हैं। जो मैं सभी प्रतिभागियों के लिए बता दूं, श्री राम प्रताप सिंह जी, AGM मदर डेयरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लिमिटेड। आपका सर का टॉपिक आज है प्री कट एंड मिनिमली प्रोसेस्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सेकंड जो उनका टॉपिक रहेगा प्रोस्पेक्ट्स ऑफ IQF इंडिविजुअल क्विक फ्रीजिंग टेक्निक फॉर इंडियन F&V प्रोसेसर्स। Good morning, sir. So, am I audible, sir? सर ऑडिबल हैं आप सर, प्लीज व्याख्यान शुरू कीजिए। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं सभी की तरफ से आप हमारे इस व्याख्यान में, इस वेबिनार में। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। Thank you so much, sir. Finally able to unmute myself. Thank you so much. Good morning to all, and a special thanks to NIFTEM for providing me opportunity to participate in this thoughtful discussion. So, just one line introduction about me and my company. I am Ram Pratap Singh from Procurement Department of Safal, and Safal is a part of Mother Dairy Fruits and Vegetable Limited, and Mother Dairy is further part of National Dairy Development Board, which comes under Ministry of Dairy and Corporation. So, my topic of discussion is
pre-cut and minimally processed fruits and vegetable, and processed of IQF techniques for Indian F&B processor. So more or less both the things are same, except in pre-cut and this minimally processed fruits. Let me show the process flow also. IQF stands for individual quick freezing. So what's the difference between both the technique is, this is a process flow. In both the technology, we simply wash and sort the fruits and vegetable properly, then do the cutting, peeling in case of pre-cut, and depodding in case of peas, etc. And then for IQF, we go for blanching and freezing. And for pre-cut, we simply do the packing and store in a in our refrigeration. So this blanching we will do at 90 degree for 2 to 3 minutes, and IQF we do at minus 25 degree. That's the tunnel temperature, and product temperature is around minus 18 degree. So now next is, what is the need of this? I'll tell you, Safal is the pioneer of bringing this IQF technology in India. And like in case this, like if you have seen people go in the market and ask toothpaste ki jagah they ask for the Colgate. Similarly, for frozen mutton, for frozen peas, they will ask for the Safal. So Safal is synonymous of this frozen product. So this is again I'll show you one simple example why we need this IQF technology. So many of my friends are there in this from Jharkhand and from Bihar part. So we have our IQF plant in Ranchi also. So at the time of research, जब वो plant setup करना था हमको, so we did a very in-depth survey and research of that area. Now first question is come, why you go and set up that plant in Ranchi area? आपको वहाँ पे कोई भी, you do not find any private company who can operate in a tribal area like Latehar, Lohardaga, Khunti. वो काफी बैक अंडर डेवलप्ड एरिया था, कोई प्राइवेट कंपनी जाना नहीं चाहती थी. देन हमको मैंडेट मिला कि यू गो एंड ट्राई टू डू समथिंग इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. तो जब हम वहाँ गए सर, तो वी विल फाइंड आउट कि वहाँ पे हमने देखा कि जो जैक फ्रूट है वो और जामुन है वो जंगलों में ऐसे ही लगा हुआ है, कोई उसका बायर नहीं है. वो इट्स लाइक ए वाइल्ड क्रॉप फॉर देम. अपने आप ही वो थोड़ा बहुत ट्राइबल पीपल एग्रीगेट करके कलेक्ट करके लेके आते हैं. जो हाट में जितना बिकना था बिक गया, क्योंकि शेल्फ लाइफ कम है तो दे हैव टू थ्रो इट अवे. सो व्हाट वी डिड, हमने कुछ R&D किया, क्योंकि हमने गैप भी देखा सर कि कस्टमर एंड पे एवरीबॉडी वांट टू कुक जैक फ्रूट इन देयर होम, बट इट्स उसका जो कटिंग एंड पीलिंग इट्स ए वेरी टीडियस प्रोसेस. सो बिकॉज ऑफ, सो हमने वो गैप को कहीं ना कहीं ब्रिज किया, और हमने ट्राइब यहाँ से लातेहार, लोहरदगा, इस एरिया से हमने वो रॉ जो बिल्कुल ऑर्गेनिक है, जंगल में उग रहा है, कोई पेस्टिसाइड नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं है उसके ऊपर में. और ये जो वहाँ पे एग्रीगेटर हैं वो भी उसको लेके आते हैं, उनके लिए भी एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम हो गया वो. और हमने उसको प्रोसेस किया. प्रोसेस में काफ़ी R&D करनी पड़ी, क्योंकि एक मेन स्ट्रीम प्रोडक्ट नहीं था लाइक पीज एंड कॉर्न, कॉलीफ्लावर. तो काफ़ी रिसर्च के बाद हम लोगों ने प्रोडक्ट बनाया अपने रांची यूनिट में. उस समय वहाँ के CM साहब ने उसको इनॉग्रेट किया, काफ़ी अप्रिशिएट भी किया. और आज वो प्रोडक्ट सफल फ्रोजन जैक फ्रूट नॉट ओनली डोमेस्टिक में हम लोग सेल कर रहे हैं, बट हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं कई GCC कंट्रीज को भी. सो अभी क्या हुआ सर, एक उस समय डिस्ट्रेस प्रोडक्ट था, इसकी शेल्फ लाइफ कम होने की जगह बहुत कम रेट पे सेल किया जा सकता था, कोई ज़्यादा लंबी सप्लाई चेन में नहीं बेच सकते थे आप इसको. बट जब इसका वैल्यू एडिशन हो गया, फ्रीजिंग हो गया, तो अभी इसकी जो शेल्फ लाइफ 2-4 दिन की होती थी, अभी वो आप 2 साल तक आराम से रख सकते हैं.
provided you maintain the cold chain. उसके साथ में आप इसको एवरी कॉर्नर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कंट्री के, साथ में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और विदाउट यूजिंग एनी प्रिजर्वेटिव्स. सो दिस इज द बेस्ट थिंग. सो ये एक एग्जांपल है कि हमको IQF क्यों चाहिए. ये कस्टमर को कन्वीनियंस प्रोवाइड कर रहा है और फार्मर को डिस्ट्रेस सेलिंग अवॉइड करने के लिए भी हेल्प कर रहा है. और मेजर प्रोडक्ट हैं इसी श्रृंखला में. वी हैव स्वीट कॉर्न ऑल्सो, अगेन वन ऑफ द सक्सेस स्टोरी इन द सेम एरिया ऑफ रांची एंड नियर बाय. वहां पे पहले दे यूज टू ग्रो मेज, दे डोंट नो व्हाट द स्वीट कॉर्न इज. अर्लियर इंडिया में सिर्फ पुणे इज ओनली द वन पॉकेट वेयर यू फाइंड दिस स्वीट कॉर्न हब. Now we have developed this Ranchi area also as a second hub for sweet corn growing and processing. जदन जी, आई रिक्वेस्ट यू, आप थोड़ा टेक्निकल पॉइंट जो आप इनसाइट शेयर करना चाहते हैं प्लीज उस पर थोड़ा फोकस करें, बिकॉज थोड़ा टाइम भी लिमिटेड है हमारे पास. तो Sure, sir, sure. So regarding the technical point, sir, इसमें सबसे पहले तो जो है रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी इंश्योर कराना है. और रॉ मटेरियल जैसे ग्रीन पीस का ही अगर हम देखें तो क्या अराइवल के टाइम में क्या चेक करते हैं हम लोग, कोई रॉटन टिप वगैरह नहीं होना चाहिए. उसकी रिकवरी मिनिमम वी शुड गेट अराउंड 36% ऑफ द रिकवरी. मींस अगर सिंगल 1 kg पीस लेते हैं तो 360 ग्राम उसमें से पीस पॉड मिलने चाहिए हम लोगों को. दैट्स द मिनिमम रिकवरी. उसमें एम्प्टी पॉड, रॉटन पॉड नहीं होने चाहिए, टेंडर होना चाहिए पॉड. और जो FG का स्पेक्स है तो उसका प्रॉपर ब्लेंचिंग होना चाहिए 90 डिग्री पे फॉर 3 to 5 मिनट्स. उसका परऑक्सी टेस्ट करते हैं, वो नेगेटिव होना चाहिए. वो क्यों करते हैं? टू चेक वेदर द एंजाइमेटिक एक्टिविटी उसमें खत्म हुई या नहीं हुई. टनल टेम्परेचर शुड बी -25 डिग्री एंड प्रोडक्ट टेम्परेचर शुड बी -18 डिग्री. बाकी लेबलिंग पैकेजिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं. सो एंड देन सबसे ज्यादा चैलेंज जो आता है इसमें IQF में, दैट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल. कोई भी पीस प्रोसेसिंग प्लांट लगाएंगे तो वो पीस का सीजन सिर्फ 3 महीने का होता है. फ्रॉम प्रोसेसिंग के लिए अवेलेबिलिटी होती है जनवरी, फरवरी, मार्च तक मैक्सिमम. तो 3 महीने में कोई भी इतना बड़ा सेटअप लगाता है तो 3 महीने रन करके उसकी कैपेसिटी बाकी आइडल रहेगी, पर उसकी मैन पावर है, कॉस्ट है, तो वो रिकवर नहीं कर सकता है. तो उसके लिए उनको ये जो अल्टरनेटिव प्रोडक्ट है, लाइक पीस सीजन में पीस चला लिया, फिर अभी इस टाइम में स्वीट कॉर्न का सीजन है तो स्वीट कॉर्न कर लिया. उसके लिए आपको बैकएंड में ग्रो भी कराना पड़ेगा, जो कि हम लोग करते हैं. और आप उसको बायबैक गारंटी भी दे सकते हैं. और फार्मर को अगर बायबैक गारंटी मिलेगी तो दे कैन इजीली स्विच ऑन द क्रॉप विच एवर यू वांट. सो यही मॉडल हम लोगों ने रांची में, बाकी बेंगलोर में, दिल्ली में अपनाया है. इसीलिए हम लोगों को राउंड द ईयर वी आर एबल टू रन द प्लांट. सेकेंड थिंग, बैकएंड में भी एक तो हो गया आपका थ्रू आउट द ईयर यू हैव टू रन द प्लांट. उसके लिए रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी. एंड सेकेंड इज रॉ मटेरियल जो होगा वो एक आपको एक पर्टिकुलर रेट पे चाहिए. यू कैन नॉट गो फॉर 50 रुपीज केजी. जब पीस प्रोसेस करना है तो 50 रुपए के रेट पे नहीं कर सकते हैं. तो अगेन एक कॉन्ट्राडिक्शन आता है कि फार्मर को कम रेट वाला ही मटेरियल कम रेट ही पे कर पाएंगे हम लोग. तो इसके लिए क्या होता है सर, वी हैव टू शिफ्ट द माइंडसेट. अभी वो जो पर केजी कॉस्ट पे जो बात करते हैं उसको वी हैव टू चेंज फ्रॉम पर केजी कॉस्ट टू पर एकड़ क्या उनको रियलाइजेशन हो रहा है. ठीक है. टू इंक्रीज द पर एकड़ रियलाइजेशन यू हैव टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी. फॉर दैट यू हैव टू डू trials in the back end. You have to introduce new kind of seeds, varieties जो कि प्रोसेसिंग के लिए सूटेबल भी हैं प्लस हाई यील्डिंग भी हैं. रांची में पहले जो टोमेटो ग्रो करते थे बड़े क्रूड तरीके से करते थे. दे डोंट नो हाउ टू डू द ट्रांसप्लांटिंग. हमने बेंगलोर से वो टेक्नोलॉजी
वो नर्सरी रेजिंग टेक्नोलॉजी वैरायटीज हमने ट्रांसफर किया, नॉलेज ट्रांसफर किया, पूरा बेंगलोर से टीम ने आके रांची में किया। तो अभी उनका जो प्रोडक्टिविटी है वो जो 10 टन पर एकड़ होता था, दैट इंक्रीज अप टू 30 मेट्रिक टन पर एकड़। तो उसकी वजह से ना उन लोगों को अभी पर एकड़ रियलाइजेशन अच्छा हो रहा है, तो पूरा एक हब डेवलप हो गया। अभी आप हजारीबाग का भी ट्रेवल करेंगे तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ ये नर्सरी, और एक एक हब बन गया है वो पूरा, टोमेटो के लिए, स्वीट कॉर्न के लिए, जैक फ्रूट के लिए, आंवला के लिए, सॉरी इसके लिए, जामुन के लिए। तो बैकएंड आपने इंश्योर कर लिया कि आपके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है, फार्मर को इंश्योर कर दिया कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने की जगह पर होने के कारण से उनकी पर एकड़ यील्ड इंक्रीज हो रही है। तो ये आपकी प्रोसेसिंग का एक वन ऑफ द जो मेजर पेन पॉइंट है वो एड्रेस हो जाता है इससे। सेकंड थिंग होता है कोल्ड चेन वगैरह का लिमिटेशन था इंडिया में, पर अभी तो देयर इज लॉट ऑफ रिटेलर्स आर कमिंग, ई कॉमर्स इज कमिंग, तो उनके पास में दे हैव द प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कोल्ड चेन अवेलेबिलिटी। तो उसके कारण से अभी डिमांड भी बढ़ रही है और सप्लाई साइड में भी एश्योरिटी आ रही है। तो ये हमने आरएम पार्ट सॉल्व कर लिया उनका, और इसका अपॉर्चुनिटीज हैं, वैल्यू एडिशन कर सकते हैं इसको हम लोग, ईयर राउंड अवेलेबिलिटी होती है, मार्केट इज ग्रोइंग विद द रेट ऑफ 12 to 13% CAGR। तो सबके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी, इट्स अ ग्रोइंग फील्ड एंड वी हैव टू लुक इनटू इट कि हम लोग बाकी सबको कैसे करके फार्मर का भी वेलफेयर कर सकें और कस्टमर को भी कन्वीनियंस प्रोवाइड कर सकें। With this, I'd like to, if there is any question, love to address that, or we can go ahead with this. थैंक यू सो मच सर आपके उद्बोधन के लिए। और मैं सभी उपस्थित लोगों से आग्रह करूंगा, अगर आपके इस सब्जेक्ट के ऊपर कोई सवाल है तो आप सर से पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या अपना हैंड रेज कर सकते हैं। सर इसमें 2 ही पॉइंट है, लाइक आपकी मदर डेयरी जैसा आपने कहा था, तो जो माइक्रो एंटरप्राइज है उनके लिए जो है आर यू बाइंग फ्रॉम देम एज देयर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर, ताकि उनके बिजनेस में वायबिलिटी बढ़े? यस सर, हम लोगों का जो बाइंग मॉडल है वो एफपीओस के थ्रू ही है। जो हमारा फार्मर एसोसिएशन एफपीओस होते हैं, वही लोग हम लोग उनको सीड प्रोवाइड करते हैं, पूरी टेक्नोलॉजी नो हाउ प्रोवाइड करते हैं। इंडिविजुअल जाना चाहता है जी, इंडिविजुअल किसी भी आप जो है बाय करते हैं, इफ देर अप्रोचिंग, इफ एनी एफएमई हमारा एंटरप्रेन्योर है जिसने हमसे बेनिफिट लिया है, वो इस चीज में जा रहा है, सेगमेंट में जा रहा है, लेकिन आपका जो मेज में जा रहा है, स्वीट कॉर्न में जा रहा है, या जैक फ्रूट किस में जाना चाहता है, या मटर किस में जाना चाहता है, तो इज देयर एनी विंडो फॉर दोज गाइस? यस सर, बिजनेस मिले। हाँ, बिकॉज देखिए हम लोगों के लिए भी हम वी हैव ऑलरेडी सेट अप अ वेरी बिग प्लांट। अब हमारे लिए रॉ मटेरियल का कंस्टेंट हमेशा रहता है, तो हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रेसिव एंटरप्रेन्योरल किसान जुड़े, उससे ज्यादा एकरेज बढ़े हमारे लिए, और रॉ मटेरियल की एश्योरिटी हो। तो काफी स्कोप है कई। जी, दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ये सर कि इसमें वेस्ट का बड़ा इशू है, लाइक मटर प्रोसेसिंग में छिलके वाला इशू है। आपके कॉर्न के अंदर भी जो है, जो वेस्ट जो निकलता है, वेस्ट हैंडलिंग इज द बिगेस्ट हेडेक, तो उसके लिए कोई सॉल्यूशन है आपके पास में? इट्स नॉट अ वेस्ट सर, इनफैक्ट हमको तो यहाँ पे उसको, जो आप जो छिलका बोल रहे हैं ना सर, उसको हम लोग ऑक्शन कराते हैं। जो भी गौशाला वाले हैं वो लोग अच्छा खासा बीड करते हैं, उसको ले जाए, खुद भी लेके जाते हैं उसको। यू कैन प्रोवाइड देम हैंड होल्डिंग। हमारे माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स अगर आते हैं आगे, तो आप उनको जो है वो हैंड होल्डिंग दे सकते हैं। यस, दे आर मोस्ट वेलकम सर। और इन केस इफ दे वांट टू खुद अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, दे कैन विजिट देयर नियर बाय प्रोसेसिंग प्लांट। वी हैव अ प्लांट इन रांची, वी हैव अ प्लांट इन बैंगलोर, एंड वी हैव अ प्लांट इन दिल्ली। And further in the season, we take many of the third-party processor also in Rudrapur, Kashipur area, and then Srinivaspur area, then Krishnagiri in Tamil Nadu, the Chittoor area in the Andhra Pradesh. माइक्रो एंटरप्राइज के लिए वही, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी की मिनिमम कॉस्ट और उसका इन्वेस्टमेंट कितना हो मिनिमम फॉर माइक्रो? इसमें देखिए सर, इसमें IQF है जो इट्स अ मेजर कॉस्ट कंपोनेंट, IQF एंड ब्लेंचर, इट कॉस्ट अराउंड 4 to 5 CR
बट रुद्रपुर साइड में, काशीपुर में गवर्नमेंट ने काफी सब्सिडी प्रोवाइड की है, तो एक अच्छा हब डेवलप हो गया है वो एरिया इसके लिए, प्रोसेसिंग के लिए। Arvind ji, we can move on to next speaker. जी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। रामप्रताप सर, आपने काफी समय दिया, थोड़ा टेक्निकल ग्लिच रहा, माफी चाहते हैं सर। थैंक यू सो मच फॉर आपके उद्बोधन के लिए। और कोई सवाल होंगे आपके पास, हम भेजेंगे जीमेल के माध्यम से। धन्यवाद सर आने के लिए। थैंक यू सो मच। हमारे अगले वक्ता हैं डॉक्टर सूरज सांवलिया जी, जो एमडी हैं पैटसन ग्रुप के, और वो प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन ऑफ पिकल्स और चटनी पर आप अपना उद्बोधन आज हमें देंगे। डॉक्टर सूरज सांवलिया सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपका स्वागत है सर, प्लीज सर। Thank you very much, sir. First of all, I thankful to the NIFTEM and the Ministry of Food Processing Industries, Government of India, for giving me the opportunity to share my views, particularly in the emerging technology in fruits and vegetables processing and preservation. And specifically, my industry is in the pickle, chutneys, mango pulp, and other sauces and dips. So basically, we are the first generation entrepreneur, and myself also a technocrat. Some of the NIFTEM faculties are familiar with my company and me as well. So I'm thankful to all of you. Now I just share my PPT as what are the challenges and what are the emerging technology, particularly in processed fruits and vegetable in pickle and chutneys. So yes. So this is the poor linkage in value chain. For example, in our fruits and vegetables, there is a vast difference in the farm gate price and the consumer price. For example, we consider the round figure 100 rupees is the farm gate price, and consumer has to pay 350. That means 3.5 times is the additional price are to be increased to pay the consumer or final customer. So there is a vast opportunities. So my personal request to the government of India to how to minimize this gap, because the milk is and the role model is the milk, and Gujarat is the role model for the milk, particularly Amul. It's a very good model, cooperative model, and very successful. Even the milk is very difficult to handle, very difficult to highly perishable, and very difficult to manage. Even though the value, the cost of the milk, the farm gate price is the 100 and consumer price have to pay the 160. That means only the 1.6 times is the leakages. But in case of the fruits and vegetable, it's 350. That means 3.5 times. मेरा कहने का ये है कि इसमें काफी सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर लीकेजेस है, लेकिंग है हमारा। इसके अलावा देयर आर सो मेनी मिडलमैन। अगर जो पॉलिसी का कोई भी लैकिंग है, इसकी वजह से consumer has to pay lot of 3.5 times compared to the farm gate price. Next one. Yes. So these are the challenges in India. Generally 25% is the farmer can get as compared to the consumer's price, and in the developed countries it is 60 to 70%. And India में बात करें तो 5 to 7 intermediate between farmers and consumer, and in the advanced countries it is 2 to 3 intermediates are there. So this is the challenge, and farmer cannot get the better price, otherwise consumer have to pay the more price. Next one. This is the Indian food industry profile. Unorganized sector is the 42%, and organized is 25%. Small scale is the 33%. So how to make it more organized so that that gap can be minimized. Next one. Sir, this is the scenario once our independence was there in 1950. At that time, there was a scarcity in our agricultural product, particularly grains and fruits and vegetables. Then after green revolution is there, white revolution, particularly milk, orange revolution in the fruits and vegetable,
then blue revolution in the aqua or seafoods. And now in 2010 onwards, we have the surplus. I mean, we have the sufficient agricultural commodities. So this is the good sign, and government as well as the so many cooperative FPOs are taking the very good initiative to minimize this gap between farm gate price and the consumer price. Next one. In addition, there are a lot of opportunity. India is the growing sector. Annual growth rate of the food processing industry is the 10.8%. Export growth rate is also going to increase very fast. I mean, 25 to 26%. Fixed capital in the registered food processing industry is the 3.35 million crores. One of the major employment incentive industry. 79 lakhs people are directly or indirectly engaged in the food processing industry. In addition, government has given so many other investment opportunities. For example, largest diversified production base. We are located in the semi-tropical area, so that almost all the seasons are available. So it is a very good and strength for the India to give almost all the season, and farmer get advantage, and indirectly processing industry also get the advantage of, particularly the locational advantage of India. Even though processing is still 10 to 12%, so huge opportunity in the backward and forward integration value chain. In addition, the government good governance is also a good role, because the retail sector is also going to be increased at the 7.5% compound aggregated growth rate, and food retail constitutes the 68% share. E-commerce is also going to be increased very fastly and very speedily. Next one. These are the opportunity for the largest diversified production base. As we explained that we are the biggest manufacturer, biggest producer of the milk production, and the fruit, and second of the fruits and vegetables. Sir, if we can focus for the technology related to micro entrepreneurs and how DRPs can support in this, to be having like proper utilization of time, as like we having very limited time available, then we can take some questions as well. As we explained that the government has given the very proactive policy, FDI reforms, regulation, regime regulation for the GST and other incentive policy in the government of India's for ease of doing business. In addition, infrastructure support is also given by the government of India. Mega food park and integrated cold chain, zero tolerance toward the food wastages. There are, in addition, there are so many incentive also given by the government. For example, income tax deduction, tax exemption. Even the last 5 years, government of India has very good initiative taken as a export is become the very streamlined and very smoothly, because we are basically in the processed fruits and vegetable, and our 90% business is the export. So I feel that it's a very harmonized and systematic initiative taken by the government to, once we are going to export, automatically that shipping bill is generated, EBRC is generated. So it is a very good initiative taken by the government and ease of doing the business. Next one. This is the opportunity, as I explained, that we are geographical advantage. We have various climatic zones, as well as almost India is having the 15 major climatic zone, which is the biggest advantage, and none of the countries in the world having such advantage. Next one. These are the opportunities. 52% is our cultivable and agricultural land, compared to the other world average is the 11%. As explained that the 15 major climatic zones exist in India. 46 out of 60 soil types exist in India. As we explained that we are the semi-tropical area, so the sunshine hours is there, so that almost all the seasons are there. Next one.
This is the general I'm just explaining. Later on, I particularly go for my particular pickle and chutney industries. So we do not give in details. The largest, these are also opportunities because the largest population in the world. Now we are the biggest population as well as the demographic dividend. Only 1/3 produce is the soil quality produce. 3.5% produce goes to the processing and provided the total value addition of the 15%. So a lot of opportunity is there. Next one. These are the some of the data that India is ranking in particularly cereals, pulses, milk, fruits and vegetable. Next one. These are the opportunity in the food processing sectors, grain processing, consumer food products, meat processing, fish processing, edible oil and fat processing, sugar and khansaris, milk processing, fruits and vegetable processing. Next one. Particularly fruits and vegetable, this is the situation. Canned and vegetable having the 4%, tomato processing having the 4%, scotch and synthetic syrups 4% and 8% respectively. RTS drink 13%, pickle is the 12%, and jam jellies 10%, fruit juice and pulp 27%. Next one. This is the processing technology from farm gate to the consumer. Next one. These are the opportunity at the post-harvest operation at the farm gate. Secondary pre-processing, I mean at the catchment area, milling and grading, at the primary processing, and high-level processing at the factory level. Next one. These are the opportunity and the and lot of scope is there. Next one. Worldwide food consumption patterns changing rapidly, so we can say that there are a lot of technologies also going to be comes in the industry. Later technology, in particularly plant and machineries, lot of technology comes from the overseas market, and the changes are the more people are also become the very health conscious and very useful for the particularly health conscious, and their purchase power is also going to be increased, so that the eating habit is also going to be changed. So people are more preferring the fruits and vegetables, more pulses and fibers, more milk and meat. So this is also one another opportunity for changing the food habit. Next one. Some of the emerging technologies for the emerging of the nuclear family, so that nowadays the processed fruits and vegetables are very popular as it become the convenient food. Some of the families having the constraint in the time, so that this industry is also going to be increased. Emerging for the convenient foods, spirit of the freedoms. So this is the another opportunity as the time going. Next one. Arvindji, please focus for the technology which we are looking for, that is pickle. So Yeah. because limited time is there, sir. Sir. Next. So go for my particular company's another PPT. So it will be particularly in the pickle and chutney. This is also emerging trend. Next PPT. Next one, please. Next. Another PPT, please. Is it visible now? Now is it visible? Yes, sir. Please, Yeah, sir, continue, please. sir. And we have limited time, sir. Please, sir. Okay, sir. Yes, we explained that we are the first generation entrepreneur, and we have started our industry in 2003. And initially, our beginning was very small and make it big. Just a minute. Yes.
So we are the Petson group of companies. We have the 2 units, plant 1 having the capacity of the 6 metric ton per hour, Petson Foods India Private Limited, which is located at the Navsari in Gujarat, nearby Surat. In this unit, we are manufacturing canned fruits and vegetable, pickle, chutneys, paste, jam and squash. And this is our another plant in which we are manufacturing and exporting the tomato product, particularly tomato concentrate, tomato puree, sauces, frozen fruits and vegetables, and natural jaggery. This is our plant photographs. This is our infrastructures. This is our plant and machineries. Just we go for fast. Plant and machineries. This is in-house our quality control labs. This is our vision. We do not go for detail, and we come to the directly pickle and chutney. This is our business principle. This is our quality policy, business ethics. I want to share this PPT. I want to share detail in this way because this is the very useful for some of the startup as well as the PMFME. We have started in 2004 with a small capacity of the 800 metric ton per annum. And every year we are going to be expand our capacity in 2006, 2008, 2010, and 2012. We are the second largest manufacturer and exporter of the processed fruits and vegetables. In 2018, we have achieved the BRCGA standards, gold card holder, and Costco certified, which is the mandatory for the American countries. Our company is the Costco certified as we are fulfill all the European Union's norms. And 2025, we crossed the 850 million Indian rupees our turnover. This is our working policy. We do not build the business. We build people, and then the people build the business. This is our entire team, our HR management. This is our brief details. We are in the fruit pulp, fruit slices, canned vegetables, pickles. We have pickle in vinegar, pickle in oil, sweet pickles, hot pickles. We are also manufacturing the regional pickle. For example, North Indian people having the different eating habits. South Indian has the different one. Gujarati people having the difference. We have the various chutneys, and particularly pickle, we have the 27 variants of the pickle, and chutney, we have the 12 variants of the various chutneys, particularly fruits and vegetables. In addition, we are manufacturing the tomato product and frozen fruits and vegetables. These are the fruit pulp. Major is the mango, Kesar Alfonso, guava, papaya, custard apple, sapota. These are the pickles. As we explained that the hot, sweet Gujarati pickles, Pachranga pickle, particularly in North. So some of the overseas buyers are the migrated from India to the overseas country, and they have the different eating habit, so that we are particularly fulfill their requirement by the regional taste. थैंक यू सर। मैं अब थोड़ा सा शॉर्ट टाइम है सर हम लोगों के लिए भी, और नेक्स्ट 1-2 मिनट में आप थोड़ा सा जो हमारे नए जो स्टार्टअप्स के लिए हैं उसके लिए कुछ बताइए, ताकि जो लोग जुड़े हुए हैं वो इस प्रकार से कुछ अपना स्टार्टअप शुरू कर सकें, और फिर 1-2 मिनट के बाद सर हम नेक्स्ट स्पीकर पे जाएंगे सर। थैंक यू सर। ठीक। So these are the chutney. I just go through my slides, and later on any questions are there, then we go for the question answer. Otherwise, just share me your question, and I share my email ID as well as my number, so that I can answer whatever the question will be there. Thank you, sir. Thank you. Yeah. These are the jaggeries. International market. मेरा सभी लोगों से अनुरोध है, किसी का कोई सवाल है तो सर से लेते हैं हम। सूरज जी, मेरा क्वेश्चन था। बोलिए सर। आप जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, चटनी, जैम, ये काफी पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे माइक्रो एंटरप्राइज बनाते हैं।
और सिंस आप कॉस्ट को EU सर्टिफाइड हैं, आपका इतना बड़ा आपने स्केल अचीव किया है, आप इतना एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो क्या आप थोड़ा हैंड होल्डिंग कर सकते हैं हमारे एंटरप्राइजेस की? उनको अगर मान लीजिए एक्सपोर्ट की संभावना तलाश करनी है, उनको अपने प्रोडक्ट्स को बाहर लेके जाना है, तो क्या उनकी आप क्या कैसे हेल्प कर सकते हैं, थोड़ा बताएं इस बारे में। Sir, particularly, I explained that we are the first generation entrepreneur. So biggest challenges was the market, because everybody are not the manufacturing. They can do the outsourcing also. But biggest challenges is for the domestic as well as the international market. तो मैं मेरी बात करूं तो हमने जो इंटरनेशनल मार्केट कैप्चर किया है, तो मैं तो पहले थैंकफुल कहूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और पर्टिकुलरली गवर्नमेंट ऑफ गुजरात. There are so many international exhibitions are to be held in the overseas country as well as India. For example, हमारा अगर इनिशियल कोई स्टार्टअप है और वो अपना इंटरनेशनल एक्सपोर्ट शुरू करना चाहते हैं, तो आहार एक बहुत अच्छा एग्जीबिशन है विच इज हेल्ड इन द दिल्ली, और वहां पे काफी सारे बायर्स आते हैं. इसके अलावा इंडस फूड करके एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहां पे TPCI ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और उसमें काफी सारे ओवरसीज बायर को इनवाइट करते हैं. और थैंक टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिकॉज दे आर इनवाइटिंग द ओवरसीज बायर एंड दे आर प्रोवाइड द वेरी गुड इनिशिएटिव इंसेंटिव ऑल्सो. तो आने जाने का खर्चा देते हैं, यहाँ पे स्टे करने का देते हैं, तो काफी सारे ओवरसीज बायर आ रहे हैं. तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि वहां पे उसको टाई अप कर पाए. तो ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई स्मॉल स्टार्टअप है कि कोई नया इंडस्ट्री शुरू करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है. 2004 में ऐसी गवर्नमेंट की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं थी, तो काफी सारे चैलेंजेस मैंने फेस किया था, लेकिन अभी ये अच्छा हो. इसके अलावा अपीडा है, स्पाइसिस बोर्ड है, इसके अलावा FIO है, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे काफी सारे प्लेटफॉर्म है. वहां पे भी उसको एक एग्जीबिशन में प्रॉफिटेबल या तो छोटा एक बूथ मिल सकता है सब्सिडाइज रेट में. तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है इंटरनेशनल मार्केट को ग्रास्प करने का. ये पॉसिबल होगा कि हमारे कुछ बेनिफिशियरीज अगर इंटरेस्टेड हो, आपकी विजिट कर सकते हैं फैक्ट्री में, आपके कुछ बेसिकली सर मैं भी एक एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट हूँ, बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एमटेक स्पेशली इन एग्रीकल्चर प्रोसेस एंड फूड इंजीनियरिंग. तो गुजरात से और महाराष्ट्र, राजस्थान से काफी सारे स्टूडेंट भी विजिट करने आते हैं, ट्रेनिंग में आते हैं. मुझे बताते हुए खुशी होता है कि एवरी ईयर वी आर प्रोवाइडिंग द 150 स्टूडेंट्स फॉर द पर्टिकुलर इन ट्रेनिंग इन अवर इंडस्ट्री. उसमें ज्यादातर फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट रहता है, डेयरी टेक्नोलॉजी वाले आते हैं, कोई एग्री बिजनेस मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स भी आते हैं. तो वी आर एंटरटेनिंग दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट्स. और मैं तो ये भी बोलता हूँ कि जो हमारा डेवलपमेंट में यूनिवर्सिटी या तो गवर्नमेंट का एक ऑब्लिगेशन है, तो दिस इज द राइट टाइम टू वी हैव टू मोबिलाइज whatever the given by the societies. थैंक यू सो मच. ये बहुत एनकरेजिंग आपकी विचार. हम डेफिनेटली आपसे कनेक्ट करेंगे और Yes, इस सेक्टर में आपसे आपका जो आपने ये मुकाम हासिल किया है, जो आपका अचीवमेंट है, डेफिनेटली विल वांट कि वो इंस्पिरेशन बने हमारे माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए. तो थैंक यू अरविंद. आई थिंक वी कैन मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ. थैंक यू सर. थैंक यू डॉक्टर सूरज सामलिया जी, आपका धन्यवाद. मैं अभी समय नष्ट न करते हुए श्री आलोक खंडेवाल जी को इनवाइट करूंगा अपने व्याख्यान के लिए. श्री आलोक खंडेवाल जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर. हाँ सर, प्लीज अपनी स्लाइड शेयर कीजिए. मैं छोटा सा परिचय दे दूं. श्री आलोक कुमार जी MD हैं खंडेवाल फूड प्रोडक्ट्स के, और आज ये हमें मॉडर्न अप्रोच फॉर प्रोसेसिंग ऑफ फ्रूट प्रिजर्व और कैंडीज जो मुरब्बा है उसके ऊपर एक व्याख्यान देंगे. सर आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच सर. मेरा नाम आलोक है. मैं प्रतापगढ़ यूपी में एक छोटी सी जगह प्रतापगढ़ है, वहाँ पे मेरा मेन काम आंवले और बेल के ऊपर है. तो हम भी, जैसे सर ने बोला कि हम भी फर्स्ट जनरेशन है, मेरा कोई नो हाउ नहीं था इस बिजनेस में. बेसिकली मैं लॉयर था और सिविल सर्विसेज वगैरह देता था, एग्जाम वगैरह. तो एनीवे मैंने 2000 में अपने आंवले मुरब्बे और आंवले कैंडी को काम को शुरू किया. काम शुरू करने की वजह ये भी थी सर कि प्रतापगढ़ जो है वो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आंवला यहीं प्रोड्यूस होता है. हमने बहुत बेसिक तरीके से काम शुरू किया था. जैसे हमारे पास आंवले मुरब्बे और आंवला कैंडी पे फोकस किया था, और उस टाइम जो हमने काम शुरू किया था तो बहुत छोटे छोटे बैचेस में हम लोग काम करते थे, क्योंकि कोई ऐसा किसी भी कंपनी के पास ऐसा कोई टेक्निक नहीं थी जो आंवले मुरब्बे कैंडी को लेके कोई फोकस करता था, क्योंकि बहुत ट्रेडिशनल तरीके से लोग इस काम को करते थे. धीरे धीरे सर हम लोग ने भी काम को शुरू किया, छोटे छोटे बैचेस में काम किया, तो 6-7 साल तो काम को समझने में लग गए.
इसके बाद जब थोड़ा सा हमारा एक्सपोर्ट का थोड़ा सा क्वेरीज आई या फिर थोड़ा इंडियन आर्मी की क्वेरीज आई, तो हम लोगों ने थोड़ा सा मॉडर्न अप्रोच बनाने की कोशिश किया कि कैसे हम इस चीज को स्केल अप कर सकते हैं। जैसा मैंने आपसे बोला कि कोई भी कंपनी रेडीमेड ऐसे, जैसे आपको केचप बनाना हो या आपको जैम बनाना हो, पिकल बनाना हो, तो एक सिस्टम है। आप चले जाओगे मार्केट में, आप बोलोगे मुझे 3 टन 4 टन पर डे या पर आवर का चाहिए, तो यू विल हैव दैट काइंड ऑफ मशीनरी एंड ऑन। हमारे काम में ऐसा नहीं था। तो ये करीब 4-5 साल हमको लगे इसको थोड़ा स्केल को बढ़ाने के लिए, क्योंकि प्रिकिंग मशीन भी नहीं थी। आंवले के मुरब्बे को बनाने के लिए सब प्रिकिंग करनी पड़ती है। तो पहले क्या होता था सर कि भाई औरतें आती थी आपके आंवले को, और वो भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, आप काम को बढ़ा नहीं सकते थे। एनीवे धीरे धीरे फिर हम लोगों ने अप्रोच किया, लोगों के पास गए, अपनी समस्याओं को बताया, तो धीरे धीरे हमको चीजें बनने लगी। और फिर आज की तारीख में हमारे पास आमले मुरब्बा कैंडी का एज फॉर एज प्रोसेसिंग इज कंसर्न वो 100% ऑटोमाइज है। और अभी जिस हिसाब से चीजें बन रही हैं, फिर हम लोगों ने ये भी देखा जब हम मैनुअल करते थे तो लॉट वाइज, बैच वाइज, कलर में, टेस्ट में बहुत अंतर आते थे। जब से हमने थोड़ा मैकेनिज्म किया, चीजें थोड़ी बेहतर बनती चली गई, लॉट में कंसिस्टेंसी, टेस्ट में आने लगा। तरीके से हम लोग को लगा कि हाँ, जब जैसे हम लोगों ने मॉडर्नाइजेशन किया तो हमारा टर्नओवर भी काफी अच्छा हो गया। इंडियन आर्मी जो बहुत बड़ा बाहर है आंवले के मुरब्बे के होते हैं, तो उनको भी हम लोग काफी अच्छे से एंटरटेन करने लगे। पहले उनके ऑर्डर आते थे, हम मीटअप नहीं कर पाते थे कैसे इनको मालते हैं। आज की तारीख में उनके जितने भी ऑर्डर आते हैं उसको हम अच्छे से हैंडल करते हैं और बहुत अच्छे से इनको सप्लाई भी करते हैं। थोड़ी दिक्कतें सर इसमें ये, और आज की तारीख में एज फॉर एज आंवला मुरब्बा इस कंसर्न वी है, ब्लांचर है सर, छोटी सी क्रेन है, एलिवेटर है, कन्वेयर है, शुगर सिरप टैंक ट्रांसफर का है। तो जहां तक मेरी नॉलेज है आंवले मुरब्बे को लेके हमारे पास, हमारी इंडस्ट्री में मैंने देखा नहीं बाकी इंडस्ट्री जो इस तरह से मॉडर्न अप्रोच के साथ काम कर रही है। थोड़ी दिक्कतें सर आंवले की कैंडी में आती है। आंवला कैंडी जब आप बनाते हैं सर, मैं थोड़ी गुजारिश कर रहा हूँ निफ्टम वालों से, थोड़ा सा इस चीज को देखें कि कुछ चीजें हम लोग की आवश्यकताएं होती हैं जो नहीं पूरी हो पाती हैं। हम लोग CISH से भी कांटेक्ट में थे, CFTRI मैसूर से भी ट्रेनिंग लिया है। जैसे हमको आंवले की कैंडी को फोड़ना होता है, तो आंवले कैंडी जब हम फोड़ते हैं तो उसमें हल्का सा वुड होता है टॉप पोर्शन में। तो हम लोग ऐसा चाहते हैं कुछ ऐसा सिस्टम बने जो यूनिवर्सिटीज वगैरह थोड़ी हम लोग की हेल्प करें, इस चीज को कैसे हम समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आंवला कैंडी की जो स्पिटिंग है उसमें बहुत दिक्कत आती है, और आंवला मुरब्बा वगैरह जैसे आज की तारीख में प्रोसेसिंग हमारी 100% ऑटोमाइज है, लेकिन जब हम मुरब्बे को पैक करते हैं वहां पे थोड़ा मैनुअल अप्रोच करना पड़ता है। तो हम ये भी चाहते हैं कि कुछ यूनिवर्सिटीज वगैरह हेल्प करें हमारी, और जो भी इनिशियली जो भी आपस में ट्रांसफर का होता है, पैसे का भी जो होता है, वो सब चीजें हो सकती हैं वो चीजें। तो धीरे धीरे फिर हम लोगों ने कैंडी को लेके हमारे लिए ड्राइंग की एक समस्या आने लगी कि हम उसको ड्राइंग कैसे करें। आज से 20 साल पहले भी सर हम क्रॉस फ्लो ड्रायर पे काम कर रहे थे, आज भी उसी पे कर रहे हैं। हमने ट्रायल काफी किया कि कंटिन्यूअस ड्रायर हो गया इस तरीके से, और IR ड्रायर हो गया, लेकिन सर ऐसा कुछ सक्सेसफुल इसलिए नहीं हुआ कि जो कैंडी होती है थोड़ी स्टिकी होती है, शुगर सिरप लिए रहती है। बाकी अगर आपको ड्राइंग करना होता है, फ्रूट एंड वेजिटेबल होता है, मान लीजिए मटर है, गोभी है, पालक है, उसको सुखाना इज वेरी क्वाइट ईजी। लेकिन जब हमारा जो प्रोडक्ट है किसी भी ड्रायर वाले से बात करते हैं, वो तो एक तो कहता है कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन जब एंड रिजल्ट पे आते हैं ना सर, तो वो प्रोडक्ट हमको वो नहीं मिलता जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी एक सज्जन अभी कुछ देर पहले बात कर रहे थे फ्रीज ड्राइंग को लेके, उन्होंने बोला कि 30 लाख रुपए लगेंगे, 20 किलो उसकी ड्राइंग आएगी, 20 किलो उसका इनपुट होगा और आउटपुट शायद 20% लेस करके बनेगा। मेरा मतलब सर ये है कि कुछ यूनिवर्सिटीज वगैरह को हम लोग को भी हेल्प करनी चाहिए, कैसे कॉस्ट इफेक्टिव चीजें हमको मिल जाए। और ये चीज ऐसी है सर पूरी हेल्थ से जुड़ी हुई है। पहले आपका वाराणसी है, अहमदाबाद है, जयपुर है, वहां पे इस तरह के काम बहुत सारे होते थे, लेकिन धीरे धीरे जब ड्राइंग की फैसिलिटीज अच्छी नहीं आने लगी, जब वो सारे सन ड्राइव पे चले गए, तो क्वालिटी भी नहीं थी, डस्ट पार्टिकल्स भी ज्यादा होने लगे। उस तरह से धीरे धीरे अहमदाबाद सबसे बड़ा मार्केट था सर, धीरे धीरे कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ, इनोवेशन नहीं हुआ। आज की तारीख में अहमदाबाद से कैंडीज वगैरह सब खत्म हो गई, और हम लोग के पास भी सर डिमांड काफी अच्छी रहती है ड्राइंग प्रोडक्ट की, लेकिन ऐसा हमारे पास टेक्नोलॉजी भी नहीं है। और जो टेक्नोलॉजी आप लोग बातें करते हैं
डोंट टेक इट अदरवाइज, वो बिल्कुल जो टॉप स्केल के जो प्रोसेसर्स हैं उनकी बात करते हैं। मोटा मोटा अगर आप देखते हैं सर कि जो प्रोसेसर्स है फ्रूट एंड वेजिटेबल पर्टिकुलर, वो 90% प्लस माइक्रो छोटे होते हैं, जो 20 आदमी 50 आदमी 100 आदमी को रोजगार देते हैं। मेरा थोड़ा गुजारिश ये थी कि थोड़ा हम लोग की इस नजरिए से थोड़ा देखा जाए कि ड्राइंग जैसी चीज को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाए। हम चाहते हैं आंवले की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो हम कस्टमर तक पहुंचा भी दें। तो यही मेरा कहना था, यही एक मेरा अप्रोच था। बाकी हम लोग अपने लेवल पे जो मॉडर्नाइजेशन कर सकते हैं वी हैव ऑलरेडी डन। इसमें हमको CISS लखनऊ ने बहुत हेल्प किया था। और आज की तारीख में जैसे मैं मैसूर गया CFTRI वालों से बात करने, उनके चार्जेस भी सर इतने ज्यादा होते हैं ना, वो अफोर्डेबल नहीं होते। और एक होता है सर, एक आप एक अपने लैब में कोई प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं, और एक होता है उसका कमर्शलाइजेशन करना। लैब वाला जो प्रोडक्ट होता है ठीक है, अच्छा लगता है, अरे यार बहुत बढ़िया है, लेकिन वही जब आप 1 टन 2 टन पे आ जाते हो ना, तो सर वो चीज नहीं मिलती जो हम लैब वाला देख के आते हैं। तो कुल मिलाकर मैं यही कहूंगा सर, जब से हम लोगों ने थोड़ा सा टेक्नोलॉजी अपग्रेड किया, चीजों को देखा, हमारी सेल भी बहुत अच्छी हुई। इंडियन आर्मी जैसे बड़े बायर को हम एंटरटेन कर रहे हैं। आज की तारीख में UK, USA, कनाडा, दुबई, कतर, जहाँ पे इंडियन ज्यादा है ऑनेस्टली, वहां पे आंवले के प्रोडक्ट्स काफी अच्छे जाते हैं सर। बस यही कहना था। बाकी आप लोग कोई क्वेश्चन हो प्लीज बताइएगा, समय भी शायद आप लोग बोल रहे हैं कम है। धन्यवाद सर, आपके व्यावसायिक दृष्टिकोण को बहुत आपने स्पष्टता से प्रस्तुत किया है, और आशा करता हूँ सब लोगों को एक ग्राउंड रियलिटी के रूप में आपका आज वक्तव्य लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्वेश्चन ले लें क्योंकि हाँ सर प्लीज सर, मेरा सभी से अनुरोध है कि आपके जो सवाल हैं आप सर से पूछ सकते हैं। सर हमारे साथ बने हुए हैं। प्लीज। बाकी सर एक रिक्वेस्ट और थी, आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनको कभी भेजिए, वो भी आए हमारे यहाँ सीखे, हम भी उनके अनुभव से सीखें, तो विन विन सिचुएशन होगी सर। बच्चे हैं, ये आएंगे सीखेंगे, इनका नजरिया भी सर अगर आप बता सकें कि जैसे आंवले के क्षेत्र में आपने बहुत काम किया हुआ है, तो इफ समबडी वांट्स टू लाइक अ माइक्रो एंटरप्रेन्योर स्टार्ट, क्योंकि आपने शुरू में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की हैं, तो इफ दे वांट टू स्टार्ट हाउ दे शुड स्टार्ट, और इसके लिए कोई गाइडेंस उनको मिल सकता है आपकी तरफ से, और व्हाट विल बी द मिनिमम साइज और द कैपेसिटी इन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो हमारा जो DRP है वो उसको समझ करके एंड देन ही कैन प्रपोज सम काइंड ऑफ प्लान फॉर आवर एंटरप्रेन्योर्स। सर जहां तक इसकी बात है, तो आपके IT कानपुर को एक प्रोजेक्ट मिला था आंवले के ऊपर, तो उनका ये अप्रोच ये था कि जो किसान लोग हैं, जो जहाँ पे लाइट नहीं है, जहाँ पे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, उनके लिए उन्होंने चीजों को डेवलप किया था। जहां तक मेरी गाइडेंस की बात है, ऑलवेज मोस्ट वेलकम, कोई भी बंदा आए, कुछ भी आए, ये लाइन बहुत अच्छी है, लेकिन नजरिया बस यही है सर कि मॉडर्न अप्रोच ज्यादा नहीं मिलने से उतनी चीजें डेवलप। आज मैं अफोर्ड कर सकता था, मैंने मशीन लगा लिया, नहीं कोई नया बंदा आएगा तो इनिशियली वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। हमने तो चलो 10 साल 12 साल बाद उस चीज को अफोर्ड कर लिया। बाकी जहां तक बात है, शुरुआत छोटे से करनी चाहिए। नो हाउ कैसे प्रोडक्ट को बेहतर बनाने की शिक्षा दीक्षा ऑनेस्टली हम दे देंगे, कोई ढका छिपा नहीं रखते। हमने पूछते पूछते हम भी आज यहाँ तक पहुंचे हैं, तो बेहतर ये है। बहुत अच्छी लाइन है सर, अच्छे प्रोडक्ट, और निफ्टम जैसा इंस्टीट्यूशन थोड़ी भी हम लोग को थोड़ा सा गाइडेंस देगा, नए बच्चों को गाइडेंस देगा, दैट विल बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर ईच एंड एवरीवन। सर मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड क्या होगा? सर ये डिपेंड्स करता है सर, आप कितना प्रोडक्शन करना चाहते हैं। आप मान लो सर आपका नजरिया है आप 1 टन अप्रोच 1 टन आप करना चाहते हो, तो 1 टन बनाने के लिए मोटा मोटा आप मान लीजिए सारा आपका हॉल जो भी है, एज फॉर मैकेनिज्म इज कंसर्न, यू नीड टू हैव ए बॉयलर, 2-3 कैटल चाहिए, ब्रिकिंग मशीन चाहिए। मेरा अपना नजरिया कहता है ज्यादा से ज्यादा आपके स्टार्टिंग 20-25 लाख में तो होगी। अगर आप बहुत इससे भी नीचे आओ तो भी समस्या नहीं है सर, आप स्टार्टिंग भगोने से कर सकते हो। बहुत ऐसा नहीं कि पैसे को लेके 20 लाख हो तो इस काम शुरू होगा। नजरिया बढ़िया हो, अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट खिलाना है। ये जो चीजें होती है ना, ये सब चीज बेचने के लिए नहीं होती, खिलाने के लिए होती है। बेचना उसके बाद होता है, यही नजरिए का अंतर है। आप बनाने के लिए, खिलाने के लिए चीजों को बनाओ, के लिए नहीं बनाओ। जब बेचने के लिए चीजों को आप बनाते हो, उसका नजरिया दूसरा है। खाने के लिए बनाते हो तो मुझे लगता है कंपटीशन कम हो जाता है, स्वीकार्यता ज्यादा हो जाती है। बेहतर ये है, पैसे इज नॉट एन इशू। आप चाहो तो 100 किलो 200 किलो 2 भगोने गैस हल्का फुल्का स्टार्ट करो। आपको लगता है
ये चीजें डेवलप हो जाएंगी, बन जाएंगी, तो स्केल अप आराम से हो सकता है। स्केल अप कहाँ से होगा, मैं आपको बहुत ज्यादा भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको 2-3 जो मैन्युफैक्चरर है उनका मैं आपको रेफरेंस दे सकता हूँ। ठीक है सर। अरविंद जी, DRPs के क्वेश्चन ले लीजिए अगर आए हैं आपके पास। हाँ सर। सर एक गिरीश सिंह जी पूछ रहे हैं, सर प्लीज शेयर द आंवला ड्राइंग के लिए क्या क्या यूज करना है सर। ये सवाल मधुर भास्कर जी पूछ रहे हैं कहीं से। सर आंवला ड्राइंग के लिए जैसे आपने आंवले को प्रोसेस कर लिया, आंवले की डीसीडिंग वगैरह करके सुगर सिरप वगैरह डिप करके, ये करीब 5 दिन का प्रोसेस है। उसके बाद अगर आप 55 से 58 डिग्री सेल्सियस पे आप उसको ड्राइंग करते हैं तो करीब 14 घंटे लेता है। ये आपका मॉइस्चर 13-14 आपको मेंटेन करना पड़ता है, और ये आपका करीब 15-16 घंटे लेता है। और जो आपका जो टेम्परेचर होगा वो 55 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। एक यही सबसे बड़ी समस्या है। अभी जो हम 55 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं सर, उसमें हमारा 14 किलोवाट लगता है। आज की तारीख में हमने बहुत ट्राई किया, हम सब जगह घूम फिर आए, लेकिन जनरल फ्रूट एंड वेजिटेबल ड्राइंग करना दूसरी बात है, बातें करो तो बहुत लंबी लंबी होती है, लेकिन जब एंड रिजल्ट आना, हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो हमें उतना नहीं मिला जितना हमें ट्रेडिशनल क्रॉस फ्लो ड्रायर से मिलता है। तो अब एक क्रॉस फ्लो ड्रायर 100 ट्रे का जिसकी कैपेसिटी 250 kg होती है, वो हमें 14 किलोवाट लगता है। आज की तारीख में हमारे पास 5 है, तो आप खुद ही सोचो, इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा, इलेक्ट्रिक खर्चे भी ज्यादा, और जितना हमें चाहिए प्रोडक्शन वो बिल्कुल नहीं मिलता। और जहां पे हमें लाइट का भी कंस्ट्रेन है सर, थोड़ा व्यावसायिक दृष्टिकोण सोचेंगे, जेनसेट में आप कितना डीजल चला लोगे। तो थोड़ा सा देखिए सर आप लोग, और अपने बच्चों को भेजिए, हमारे यहाँ आए, सीख के जाएंगे, इसका मैं आपको वादा करता हूँ। हम भी बहुत कुछ सीखेंगे उनसे। जी सर। और कोई क्वेश्चन हो तो, अदरवाइज हम फिर नेक्स्ट। सर मैं मेरा एक क्वेश्चन है सर से। सर मैं समहाउ प्रतापगढ़ में कोई बर्फी खाया था आंवले की, तो क्या ऐसे और भी प्रोडक्ट हैं वहां पे जो हमारे लोगों में फेमस नहीं हुए इधर अभी प्रदेश लेवल पे, पर मैंने वहां खाई, मुझे लगा कि ये तो लोगों के पास पहुंचनी चाहिए। सर मेरा सवाल है कि और भी ऐसे प्रोडक्ट हैं। आपने अच्छा बोला, बर्फी क्या, बर्फी पहले बार हमारे यहाँ से बन के ही निकली है सर। तो आंवले की सर बर्फी है, आंवले के लड्डू हैं, आंवला अनारदाना है, आंवले का लेमन है, सर बहुत अच्छे प्रोडक्ट है। आंवले के बहुत वेरिएंट है और खाने लायक है, एंड वी आर डूइंग क्वाइट गुड। हम कहीं माल बेचने नहीं जाते सर, जितना प्रोडक्शन होता है सर, हम आज की तारीख में फॉर्चुनेटली हमें चूज करना होता है हमें किसके साथ बिजनेस करना है। तो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं सर, कोशिश करते हैं, आप ये भी सर्विस ही कह लीजिए, खाने के लिए सामान बनाते हैं, कुछ ना कुछ फर्क पड़ना चाहिए। आदमी आंवला खाए तो लगना चाहिए कुछ खाया है, आंवला बेल। जी सर, थैंक यू सो मच। मैं समय का अभाव है, आपका शुक्रिया करता हूं सर, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सभी की तरफ से। आपने बहुत शानदार उद्बोधन अपना दिया है, और मुझे ऐसा लगता है कि जमीनी स्तर पे जो भी डीआरपी हैं और उनके लिए बहुत प्रेरणादायक रहेगा। और आशा करते हैं कि भविष्य में हम आपसे जुड़ें और आपके अनुभव का, विस्तृत अनुभव का लाभ हमारे डीआरपी और अपने क्षेत्र के लोगों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और मैं अत्यधिक समय न नष्ट करते हुए मैं अपने अगले वक्ता को आमंत्रित करना चाहूंगा, श्री ओपी चौहान जी। श्रीमान ओपी चौहान जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? यस सर, आप उपस्थित हैं, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर अपना व्याख्यान शुरू करें। मैं आपके विषय में एक छोटा सा परिचय दे दूं। डॉक्टर ओपी चौहान जी हमारे साथ हैं, हेड हैं एफबीटी डिवीजन DFRL मैसूर से। और आज आप हमको नोवल प्रोसेसिंग टेक्निक फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, हाई प्रेशर प्रोसेसिंग एंड ऑस्मोटिक ड्राइंग पर व्याख्यान देंगे। सर धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। हमारी विजिबल है सर? विजिबल है सर, इसको प्रेजेंटेशन मोड पे कर लें सर। थैंक यू सो मच सर। ओके So, good afternoon. I'm Dr. Om Prakash Chauhan, working as Group Head of Fruits and Vegetable Technology Division at DFRL, Defense Food Research Laboratory, DRDO, Mysore. Now the name has been changed, and now the lab name has been changed to Defense Institute of Biodefense Technology. So in 2024, government felt that apart from food or food technology, now you people can start working on some biodefense technologies also. So this new mandate has been given to us. So in this new mandate, we are working on biodefense technologies.
as well as military nutrition. So military nutrition as such, depending on that food technology only. So we are providing food and logistic support to the armed forces. Whatever their food requirements or logistic requirement pertaining to food, it is there. So Army, Navy, Air Force, paramilitary forces, we are providing complete solutions in terms of food and logistic support. Not only armed forces, we are providing support to the space missions also. All our NASA missions, our XCM mission, or this Gaganyaan mission, we are providing all the food support and logistic support related with food to the astronauts. So Indian astronauts, when they are visiting any space station or any space missions, they are taking food products and logistics like water dispensing system, food dehydration system, or automatic heating systems. So all those things are waste disposal systems. So they are taking from us. So in Gaganyaan mission also, these things we are providing. And already our Indian astronaut, Sudhanshu Shukla, he has carried our products to LGM-4 mission. And apart from that, we are providing, working on this biodefense technologies also. So now we are working on basically foodborne pathogens and toxins of biodefense importance. So these are our basic area where we are working. So coming to the today's talk, like food processing technologies. Basically, if we see Indian scenario, we are lagging behind in terms of technologies as well as infrastructure. Technologies means basically this food technology is not available at larger scale. Most of the technologies are instruments or machineries we are importing from outside some other countries, and that technologies we are using for that value addition and development of various food processing operations or food products. Similarly, that infrastructure like lack of electricity, or cold room facilities, or transport facilities, or harvesting practices. So all those things is still lacking in India. And all these things lead to the loss of more than some 30-40% of total fruits or vegetables. And processing also in more or less, if you see that fruit and vegetable basically today will talk, very less processing is happening in India as compared to the Western world. So these are the big processing sector, fruits and vegetable processing sector. And this losses is accounting more than 1 lakh crore every year in Indian scenario. And if we see that developing countries like India, we are having most of the losses during our harvesting, that supply chain, transportation, or storage. Whereas in Western world, more or less, they are having better infrastructure, better processing facility, better storage facility, and they are maintaining all those things, and they are having little lesser losses. So this we can minimize by using suitable technologies. In India, basically, if you see a lot of research institutes and universities, they are working in the area of food technology, and mostly they are developing different type of food products, or they are developing technologies which are at either a small level or pilot plant level. They are not going for commercialization. Bigger machineries, bigger things, their industry should be involved. All those things is still lacking in India. And once that infrastructure is well developed, then we can reduce this post-harvest losses. So already I told why this processing is required. Basically, it is required to reduce the post-harvest losses, as well as when we are doing any processing, we get some value-added products. Suppose from tomato or any pineapple or anything, we can make different type of food products which can give better quality or safe quality products we can make as per the FSI guidelines and other things. So from a single commodity, we can make different type of food products which we can sell at little higher price, so value addition will be there, and that processor or that entrepreneur can get better profit or better margin in terms of that revenue. So these are the basic benefits, and same time we are going to get safe food products which are having little longer shelf life as compared to the fresh fruits and vegetables, because fresh fruits and vegetables are highly perishable. Their life varies from 1 day to 1 month maximum or something like that, depending on the type of the commodity. So this why value addition required. In previous lecture, maybe people have told about different type of processing conditions and other things. So basically, when we are doing any processing operation, basically we have to go for sorting, grading, and washing. These are the main steps when we are doing any processing operation, because we require uniform quality or uniform quality of raw material. So sorting, grading is very much important, and this can be done either physically or mechanically. Manual based also we can do, or mechanical, lot of machines are available that also can be used for this sorting grading. So uniform quality raw material is very important,
for this type of processing operation. We are then doing any processing, either you are making juice, jelly, or jam, or dehydrated products, or any other product. This sorting grading is a major step where we can go for that. Then cleaning, washing is very important, because in Indian scenario, we are using a lot of pesticide, insecticide, and there will be a lot of other hazards also. So to remove that, all these hazards, we require proper cleaning, washing mechanism. Earlier it was doing by washing in water or little warm water, or then chlorination can be done, or now machines are available, like ozonations are available, ozone generators are there, they can be used for this proper washing and other things. New technologies are also coming in the market, like cold plasma and other things, or UV lights. So these new technologies also can be used for this cleaning and washing, basically for phytosanitation purposes. Because in India, a lot of pesticide and insecticides are present on the surface of fruits and vegetables. Any fruit or vegetable, you can just see a lot of microbial contamination or insecticide, pesticide will be there. It can be tested in the lab. So this can be done, and these are the major operations should be followed properly when you are going for any validation. And then we have to go for proper packaging. Any food product, either you are selling as fresh, then also packaging proper importance is there, or if you are going for value-added products also, there also that packaging should be of prime importance. So proper packaging material selection, which type of food product you are using, that we have to select proper packaging material for that. Then only that food product will be stable, either in fresh form for longer duration or in processed form for longer duration. And then transportation and storage should be in proper condition. Like if you are supplying fresh and other things, it should be refrigerated or at low temperature condition, depending on the type of the commodity. It should be transported and it should be stored at that optimum storage temperature only. Otherwise, that quality of the products will be lost during storage and transportation. So these are the major problems why fruits and vegetables spoil. Already people have told, because of this fruits and vegetables aspiring commodities, a lot of moisture loss or shoot growth, germination, attack of pest, insecticide, all those things will be there. So they lose their appearance or fresh type of quality. And these are the important factors like storage temperature, relative humidity, variety, all those things, they affect the quality of the fruits and vegetables during storage. So this was like the introduction about fruits and vegetable technologies and processing are fresh problems. So now coming to the today's main topic, today I am going to cover basically 3 technologies, one basic technology, one little advanced technology, and it's a last one I will cover that a novel technology. So basically I will start with osmodehydration. Dehydration basically is removal of moisture content from any commodity. Fruits and vegetables, they contain a lot of moisture, ranging from 65-70% to 80-85-90%. So they are the basic culprit, and they are rich in nutrients. So moisture plus nutrient, they will attack more pest and this bacteria or other fungus and other things, and they will spoil the commodity. So if you remove the moisture content from the products, they will be stable for longer duration. So a lot of technologies are available for dehydration of the product, ranging from sun drying. In sun drying, just we have to cut the fruits, and first we have to short grade, wash, clean, all those things, then slice it, go for blanching, and then we can dry in sun dryers. A lot of sun dryers are available in the market now. Then little advanced technologies like hot air drying, or we can go for vacuum drying, and depending on type of varieties, we can go for this fluidized bed drying or freeze drying. So many options are available in this dehydration sector. Now we have developed technologies for this microwave drying also. We have made conveyor belt type of systems where microwaves are present, that microwaves, along with that we have included infrared also. So these type of dryers we have made, and now these type of dryers are available for commercial market. It can be commercialized easily. So this microwave, infrared or fluidized bed dryer, these are having better quality attribute. The product dehydrated using these technologies, they are having better quality attribute. They will retain color, texture, and other things. When you are rehydrating, they will absorb moisture fast. Rehydration characteristics are very good. So those technologies also can be used for making this osmodehydration. Basically, osmodehydration, why we are going, it is give some better texture in the fruit or vegetable commodities. Because here what we are doing, we are using different type of this humectants or this osmotic materials like sugar solutions, along with that some glycerol and other things, which will give a leathery texture to the final fruits and vegetables, whatever dehydrated we are making. And that will be having a moisture content of about 15 to 20% or sometimes 25% also. Generally in dehydrated products,
when we are doing that normal dehydration, moisture content reduced, we are reducing less than 10%. But here in the case of osmo-dehydrated, moisture will be above 10%. So product will be having better mouthfeel, better texture, better aroma, better color. So it will be having more commercial acceptability by the consumers. So that's why people are going for this osmo drying, basically in the case of this fruits and vegetables. Here what we have to is a very simple phenomena. We use highly concentrated sugar solutions, and there we put the fruit slices and other things. So whatever moisture is present in the tissues, that will go out from the tissues, and followed by some finished drying we can do, and we can make this osmo dehydrated type of product or intermediate type dehydrated product. So this is the flow diagram, how we do this osmo drying process. Basically, I told that unit operation we have to do, sorting, grading, washing, all those things we have to do properly, then followed by this peeling or slicing. And after that, it has to go for blanching. Blanching we can do either water blanching, steam blanching, or we can directly blanch the fruit slices or tissues or cubes in osmotic solution itself. Suppose we have made 50 or 60 degrees centigrade sugar solution, there only we can blanch the fruits and vegetables. And we have found that if we are blanching in sugar solution as such, that better quality food products are, that dehydrated products are, we are making in the final solution. So like that. And then after this osmotic dehydration, osmosis, we can finish drying, we can do by air drying or vacuum drying or pressurized bed drying or hot air drying up to a optimum moisture level, like I told, 15 to 20% or 22% in that, depending on the type of the commodity. Followed by, it has to be packed suitably in proper packaging material. Generally, this laminates we can use, or multi-layer packaging materials we can use. Otherwise, then moisture or this migration will happen, because outside if moisture is more, then it can go inside the food products again. So that we have to maintain proper packaging materials, and then it has to be kept at a room temperature and little lower temperature for longer shelf life. The product shelf life ranges from 3 months to 9 months, depending on the type of the commodity. So it can go up to 9 months also, and it is a very good solution for this fruits and vegetables storage. So this was one technology. Then coming to the next technology, because time is very short, maybe we can finish fast. Vacuum frying. Earlier, only potato chips were available. Generally, frying is done at temperature of about 160 degrees centigrade in open pans. So potato chips having a lot of starch content, it can be fried easily in open pans at 160 or 170 degrees centigrade. But when you are going for sugar-rich products, sugar-rich raw materials like mango, jackfruit, banana, ripe banana, or carrots, or apricots, or apples, they are rich in sugar. And if this type of raw material is getting, we are trying to fry at 160 or 170 degrees centigrade, that color changes from normal, this yellowish color or whatever color of the fruit or vegetable, it will turn into brown or black because of high temperature. That sugar gets caramelized at high temperature, resulting into brown or black color of the product. So we cannot fry in open pan. So technology has been developed for vacuum frying. We have made machine for vacuum frying of these fruits and vegetables, where at lower temperature we can fry the fruits or vegetables. Lower temperature means generally less than 100 degrees centigrade. Generally we fry here at 80, 85 degrees centigrade at lower, under vacuumized condition. So what happens under vacuumized condition, boiling point of water will be reduced, and at lower temperature also that moisture will be evaporated from the food tissues, and that can be removed from the machine, and very good quality this fried products can be obtained. Already this technology we have developed, machine also we have made, and this technology now we have commercialized, and 6 firms in India now they have taken this technology, and now they are making these products and selling it to the market. So this is like a healthy type of snacks. Now market is changing, and people are more aware about health. So potato chips now people are consuming less, and this type of chips where that fruit chips or vegetable chips. Vegetables also can be fried, like okra or green beans or this karela, bitter gourd, or this beetroot. All those things will be fried, and here the great thing is that color will be retained. Suppose beetroot if you are frying, it will be purple color. Suppose okra you are frying, it will be green color. That color will be retained. And same time in vacuum frying, finally we are going for this spinning at 600 RPM. So whatever surface
fat is there or oil is there, that will be removed, and you will not feel any oil on the surface of the chips. So it will be like dried chips, but it is absolutely fried, but there will not be any surface oil on the fruit tissues that slices. So very good technology, and easily it can be commercialized in India, depending on low cost technology also. I will tell about that costing also. Like that osmo drying, we can set up the 100 to 200 kg plant with minimum cost. Here this vacuum frying also with minimum cost that can be set up, and people can start using this technology for commercial markets. So this is the process diagram, how we can do all these things: sorting, grading, cleaning, washing, all those things, unit operation we have to do. Finally, then we have to cut. Then we have to blanch the material. Then here we have developed either directly it can go for frying, but when we have tried with freezing, and after freezing we are frying, that quality of the products are much better. So this is our after blanching, we have to freeze the material, and that directly that frozen material can be sent to the vacuum fryer, and at there around 70 to 80 or 85 degrees centigrade under vacuumized condition we can fry. And after that, we can go for a spinner, where that at 600 RPM, whatever that surface fat is there, that will be removed, and final product, final chip are laminated. Otherwise, moisture ingress will be there. That light and oxygen that will create problem. If you are going for vacuum packing, very good. Otherwise, you can go for gas flushing, like potato chips and other things are coming with nitrogen flushing. That type of things can be done in this type of technology to get better shelf life. Otherwise, generally product shelf life will be around 3 months. If you are doing gas flushing, shelf life can go up to 4 months to 5 months. So that type of products we can make using this vacuum frying technology. This is the machine. We have made two machines. One is like manual operated, one is like computerized control. So both machines are available. Basically, I will suggest we can go for this manual operation, very low cost machine, around 10 to 15 lakhs if these machines are available for 25 kg capacity. And it can be utilized by the entrepreneurs for making this vacuum fried chips. These are some photographs of the our products. We have fried banana, strawberries, mangoes, potatoes, pears, jackfruit. So many items we have fried, and these technologies are being commercialized. The next technology is little novel technology, high-tech technology. It is called high-pressure processing. For any preservation of food items, we require generally heat, or we remove the moisture content. Then it will be preserved. So by heating, we are having the technology of canning or retard processing, but their temperature goes up to 121 degrees centigrade, and at that temperature, most of the nutrients are lost. So basic advantage of this high pressure processing technology is that it maintains the quality and nutrient level. So here, instead of thermal processing or heat, we use pressure for inactivating the microorganisms present in the food. So at very high pressure, 600 MPa or above, all these microorganisms are inactivated, and product, if is properly packed, it will be stable for few months. And again, depending on the type of the product. So this technology, this type of machines are available, ranging from actually it started with very less range, some ml only, but now machines are available which can go up to 500 liters capacity also. So at a time we can process about 500 kg of the food material. So that type of vessels are available, high pressure vessels are available. But in India still, no company is manufacturing this machine. We have to import either from Belgium or US or Japan or European countries. So these machines are available in various countries. China also, they are making this type of machine. So any machine, but these machines are little costly, ranging from crores. And depending on the capacity of the machine, it will range to 10 crore, 20 crore or 30 crore also, depending on the company and type of the machines we are purchasing. So this is also very good technology. Here the major advantage is retention of nutrients and fresh-like quality. Fresh-like quality means that color or texture or aroma, all those things will be retained. Suppose you are processing orange juice, so thermally processed orange juice will be having distinct different color or flavor. But high pressure processed juice, you will not feel any difference. It will be like naturally, freshly squeezed juice. So that much quality difference is there. In thermally processed, vitamin loss will be 50, 60, 70%. But in high pressure process, that juices, the vitamin loss will be 5 to 7% only. So that much nutritional benefits we are getting, and better quality we are getting. And in India, one company, they have started in the name of Raw Pressury in Mumbai, Maharashtra. So they are making some this exotic juices preserved by this high pressure processing technology.
Now some RTE products are also getting manufactured in Bangalore. So this is our machine, which is having some small capacity, and this machine we have utilized for development of various value-added products like different type of stabilization of juices, tender coconut water, sugarcane juice, cut fruits and vegetables, jams, condiment paste, cereal-based products like chapati, rice, and other things, pulses, dal, and other things, sausages, meat and fish-based products. So a lot of work we have done at DFRL, and now these technologies are available for commercialization. So with this, I conclude my presentation. If any questions are there, we can discuss. Thank you so much, sir. Thank you so much for this nice उद्बोधन आपने जो दिया बहुत शानदार रहा। मुझे लगता है जितने लोग भी सुन रहे हैं बड़े धैर्यपूर्वक सबने सुना है। और मेरा सभी से अनुरोध है, अगर किसी का कोई सवाल इससे संबंधित हो, इस सब्जेक्ट से, तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में, अपना सवाल टाइप कर सकते हैं या आप हैंड रेज कर सकते हैं। धन्यवाद। Arvind ji, somebody has raised the hand. You can take the question. Sir. Yeah, please tell. Somebody has asked if you want to use jaggery in place of sugar. Yeah, it can be done. Not only we have tried with other humectants or osmotic agents also. Jaggery also can be utilized as such, because now people are more aware about health and other things. So jaggery also can be utilized. शेखर विचारे जी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। सर अपना सवाल पूछिए, आपको अनम्यूट कर दिया मैंने। सर प्लीज। Can this tunnel solar dryer can be used? Yes, it can be used. First we have to do osmosis, and finish drying we can use solar dryers or hot air dryers or vacuum dryers, anything we can use. And sir, PMFME is in Maharashtra, are they allowing this tunnel solar dryer in the scheme to take? That I am not aware, because basically I work for armed forces, and this government is, local. That this question is to for the MoFPI authorities, not with you. Yes, yes. So this can be discussed in your local offices and other thing, that horticulture department or this food processing. सर इस विषय में आप हमारे महाराष्ट्र के SPMU से संपर्क कर सकते हैं, और अगर आप हमें लिखेंगे तो हम आपका पूरा कांटेक्ट उनके साथ करा देंगे, ताकि आपकी समस्या का समाधान हो जाए, या जो भी आपको सूचना चाहिए वहां से प्राप्त हो सकती है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। दिव्या प्रेमनाथ जी, आपका कोई सवाल है, आप पूछ सकती हैं। दिव्या जी। हेलो सर, एम आई ऑडिबल? जी मैम, प्लीज अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, so sir, I had a doubt regarding I'm actually planning to do my masters in US, and I've got into a university for MS in food science वहाँ पे। तो मेरा सवाल था कि आपने जब बताए थे कि हाई प्रेशर प्रोसेसिंग के बारे में, so how important is packaging selection for this high pressure processing? क्योंकि इसमें हम प्रेशर बहुत डालते हैं ना अल्ट्रा लेवल में। So, and what type of materials will work best under this high pressure conditions? Actually, this technology is very good. Here, whatever material you are using, it should be that puncture resistant, their pinhole should not be there, that much only. Otherwise, here we are going for isostatic pressure. So pressure will be uniform from all the direction. So it is not going to rupture another thing. So any packaging material, PP, PE, or laminates or multi-layer films, you can utilize it for that high pressure processing. Okay, sir. Okay, got it. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you जी। हाँ निकिता जी, आपका कोई सवाल है, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। सर हमारे साथ बने हुए हैं। निकिता जी। Yes, sir. Sir, I have a question. Like, if I make any freeze-dried products, then what is the best packing material I should use it? Moisture proof, basically. It should be moisture proof, because freeze-dried materials will be very hydroscope. They will absorb moisture very fast. So it should be moisture proof only. So multi-layer films are better for this. Okay, sir. Thank you. If you are making juice powders and other things, or any that slices also, that multi-layer films. Okay. Basically, you use 3-layer films or 4-layer films for those type of things. Okay. अजीत कुमार शर्मा जी, एग्रो वाहिनी से आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं सर से, पूछ सकते हैं सर।
Arvindji, we should move for the next speaker, and we will take the question, and when we will be connect with sir for the further discussion. ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे अगले वक्ता हैं श्री अशोक आनंद जी। अशोक आनंद जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? श्री अशोक आनंद जी, श्री अशोक आनंद जी, अभी अनम्यूट किया मेरे को। यहाँ हम जुड़े हुए हैं जी। जुड़े हुए हैं सर, थैंक यू सो मच। मैं आपका एक छोटा सा परिचय दे दूं। अब हमारे साथ अगले वक्ता हैं श्री अशोक आनंद जी, जो एमडी है गोपी डिहाइड्रेट्स प्राइवेट लिमिटेड के। आज वो हमको स्टेट ऑफ आर्ट ड्राइंग टेक्नोलॉजी फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग पर व्याख्यान देंगे। ओपी डिहाइड्रेट्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1991 में हुई थी, वो डिहाइड्रेटेड सब्जियों, फलों और जड़ी बूटियों का एक प्रमुख प्रोसेसर है। आज के इस व्याख्यान में सर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब। क्या मेरा प्रेजेंटेशन अपलोड कर सकते हैं? आई एम अशोक आनंद, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गोपी डिहाइड्रेट्स प्राइवेट लिमिटेड। वी हैव बीन इन दिस बिजनेस सिंस 1991। आज 35 साल हो गए हैं हम ये डिहाइड्रेशन के बिजनेस में। और पहले हम यहाँ कुंडली में ही निफ्टेम के पास हमारा प्रोसेसिंग यूनिट था, and that was on a smaller scale, and now we have shifted to Kashipur, where we have the production capacity of 40,000 kgs per day, and the drying product output is based on the moisture content of different products that we do, which is between 2.5 tons to 4 tons per day. Can you put the next slide, please? The different techniques and the different ways of drying. Can I have the next slide, please? The process of dehydration is to remove 90% of the moisture in a product, and the shelf life is improved 12 times in a way that fresh vegetables जो हैं, जो 5 दिन 10 दिन या ज़्यादा महीना तक रह सकते हैं, वो 12 महीने तक उसकी शेल्फ लाइफ रहती है। और इससे वेट रिडक्शन हो जाता है, और वेट रिडक्शन के कारण ये वेजिटेबल्स जो हैं इन different climatic conditions and geographical areas में भी use हो सकता है, whether in Antarctica or whether in the Himalayas or whether in the desert conditions or in deep sea conditions. There also these products can very well be used, and also they are also taken for these space expeditions. और इसका टोटल आज के दिन world business is to the tune of $18 billion, which tantamount to about 1,70,000 crore का इस dehydrated vegetables का business around the world है। उसमें से इंडिया की जो business इस प्रोडक्ट का है वो roughly about 3,000 crores का है। So there is a lot of potential in this business, and the best part is that it can be done from a very small scale to a very large scale. Processing between anywhere between 100 kgs, and our present capacity in our new plant is 40,000 kgs. So anywhere between these sizes, किसी भी सेगमेंट में लोग आ सकते हैं, एंड जो स्टार्टअप्स हैं जो चाहते हैं
वो कर सकते हैं depending on the different kind of drying technologies which they should adopt. Next slide, please. The most common is the conventional hot air drying. Hot air drying can be done in cross flow dryers, which basically we called ovens in the small trays, but उसमें वो quality इतनी अच्छी नहीं बनती है और temperature और air का जो mix है वो proper नहीं होता है. But this is the most conventional way. And then we have good dryers which are continuous conveyor dryers, and for other purposes there are the other hot air dryers, and there are also in batch form the drying is done in the called the heat pump dryers. Heat pump dryers is a better technology than the cross flow dryers, and the product that you get is much better. And in all of these hot air dryings, the pros are that it requires much less capital than any of the other drying methods, which I will be talking about in the later slides. And as I have already mentioned, that this is highly scalable, and as you grow, you can increase the capacities, but obviously then the capex also increases along with the scale of operations. And the cons for this kind of this is that it requires high energy. The cost of energy here, whether boiler or electric, is very high in this kind of drying. But because of high scale, the cost is reduced. In any case, this is by far the cheapest method of drying any product. As I have given a comparison, the cost efficiency, the points of 5 out of 5, and nutrient retention is less because it is dried at a higher temperature, between 50 to 80 in the beginning and about 30 to 40 degrees towards the end. So when the moisture content of the product is higher, so you give more heat, and as it dries and the moisture content is reduced, then you reduce the temperature, so that as much as the nutrients can be retained, however, the score would be only 2 out of 5. The throughput, of course, is very high because of the scalability and the different size of dryers that you get. Energy efficiency, as I have mentioned, the score is again 2 out of 5 because it requires a lot of energy, and by far the air drying through the boiler is better. And if people go for the electric dryers, then the cost becomes very high. So the energy efficiency of this kind of technology, the score would be about 2. And the product quality overall, the score would be about 3 out of 5. Can we have the next slide, please? Then is the freeze drying. This is a very costly process, but the quality of the product is much better than
the traditional air drying process. In freeze drying, you have to, it is a system of sublimation from, if you let's take an example of ice. Ice would first melt and become water, and then more heat is given to it and it becomes vapor. But this sublimation in the vegetable is from it is being frozen in a way that the vapor, it's directly becomes vapor. It does not take out the water. I mean, it does not turn into water, but the water content in the product is vaporized directly. So in this method, the pros are that there is superior nutrients retained in the product, and the rehydration is almost like the fresh cut vegetable. So the feel of the product is much better than air drying. The shelf life, if kept in vacuum conditions, is also much more and can be kept for even 2.5 years. But the problems that not problems, but the cons which are there, that this is a batch process and not continuous as the hot air drying. And it is slow, and it takes a longer time to dry because of the process of sublimation. And the energy requirement is even higher than the air drying methods. So in terms of cost, most of the products are 3 to 5 times more than the conventional air drying. So the score for cost is given as 1, and that is why in most of the, as in India, we are more cost conscious. The use of these freeze drying products is very minimal, and most of the freeze drying operators in India, they are exporting their products to North America and European countries. The nutritional retention is very good, and the taste of freeze dried product when rehydrated is almost like the fresh. So the score is 5 out of 5. The throughput again is low because it is a batch process, and the score is 2 out of 5. Energy efficiency, the cost of energy here is very high. That is why the product cost becomes very high. So the score that I have given is 1 out of 5. The product quality again is a repetition of what I have said. The product is very good, and the score is 5 out of 5. Next slide, please. सर हम काफी सारे क्वेश्चन भी लेंगे बीच बीच में, तो थोड़ा हम पास करेंगे, ठीक है ना, ताकि क्वेश्चन में सारी चीजों के आंसर आ जाएं तो और ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है सर? Then it is the spray drying. Spray drying is more used to get the product in powder form. और spray drying के process में it has to be mixed with other additives like maltodextrin in order to get the uniform and nutritional quality of the product.
Spray dried is also used in milk, but we are confining ourselves to vegetables. So if you want to take in powdered form for soups, baby foods, then you use the spray drying process. And here the process is pretty fast. Between 1 to 1.5 hours, the product is dried. But this product has to be first made into pulp or slurry and then mixed with maltodextrin, and then it is put in a spray dryer, and it is sprayed, and with pressurized heat, it takes out all the moisture, and the product in powder form has around about 5% moisture content in this product. Applications, I've said that most of the tomato soups in powder form that you get, they are made by the spray dried method. And the cost efficiency is the score of 3 to 5, better than any of the two technologies that I have talked about earlier. Because it is a higher temperature drying and taking less time, the nutritional loss is higher, and the score in this product is 2 out of 5. Why I am talking more about the scores is because speaking on the different kind of drying technologies, the people who want to start this in business can choose, which I will take in a later slide. It is not that one technology is suitable for every product. There are different technologies which will give the comparisons have to be made between the energy efficiency, the nutritional contents, the rehydration process. So that is why I am talking about the performance rating, so that the people who want to start these business can choose between the different performances. Sir, sorry to interrupt. Sir, yes. if we just speed up the session so we can take more questions, because DRPs are especially looking for a special kind of products. So we will give more time to DRPs to ask questions. So we will be more focused like what their requirements are. Fine. Next slide, please. Vacuum drying, Dr. O.P. Chauhan has already mentioned. So I would not take this. Also has a smaller batch process, but these are used in products where you have to get more flavor. Like the application is better for herbs like parsley, coriander, mint, where you want the flavor of the product to be retained. So the use of vacuum drying is into volatile products, especially the herbs. Can we take the next slide, please? Then it is the fluidized bed drying. The process of fluidized bed drying is that you lay the product in trays where there is pressurized air which floats the product, and as the moisture is removed out of the product with its lightweight and the air inside the fluidized bed dryer, they from the top automatically come out at the required rate of moisture content. The product then comes out,
and it retains its nutritional content. The throughput is also higher because it is used for products which have lesser moisture in it, and you can get more output through this technology. Cost efficiency, cost is also less because the batch is less. Here, the nutritional contents are also maintained, and it is a more balanced product out of the previous 4 technologies that I have talked about. Next slide, please. Then it is another cheap method is solar drying. Solar drying practically is used now for drying of grapes and other products where the moisture content can be higher than 10%. And it is a very cheap process. And now with better technology coming in, it is that the solar energy can be retained in inverter, and this drying process can also be used at night where the sun rays are not available. So the technology is improving, and the cost efficiency is by far the best here. Nutrition contained in such products is higher because they have a higher moisture content in this product, but they cannot be used in every kind of product, cannot be dried by solar drying. Energy efficiency, definitely you give 5 out of 5 because solar energy is practically free. Whatever the capex cost is the only cost here, and it can be done from a very small scale, but cannot go to a very high large scale drying process. Sir, we have 5 more minutes to हमारे पास 5 मिनट का समय और है सर, प्लीज थोड़ा सा हम वाइंड अप करें सर। बस मेरे पास 2 स्लाइड्स हैं और। ठीक है सर, थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। थैंक यू सर। ये स्लाइड में सारा कुछ दिया हुआ है जहां से आप अपना आइडिया लगा सकते हैं, क्या कॉस्ट देनी है, क्या क्वालिटी निकालनी है, कितना आपने आउटपुट लेना है। तो दिस स्कोर इज दिस स्लाइड गिव्स द डिफरेंट स्कोर्स एंड उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या क्या प्रोडक्ट्स में, किस किस टाइप के प्रोडक्ट्स में, हाई एंड प्रोडक्ट्स में यूज करना है या पाउडर फॉर्म में यूज करना है या टेक्सचर प्रोडक्ट में यूज करना है. The choices can be made by looking at this slide. Next slide, please. And this slide may not be required because the direct questions can be put. Next slide, please. No, as I have said, that no single drying method is the perfect method. So the choices have to be made by different people according to their requirement. And the latest what is going on is the hybrid technology of mixing two kind of drying methods. पहले अगर आपके प्रोडक्ट में आपके टेक्सचर को फर्क नहीं पड़ता और हाई मॉइस्चर है तो यू कैन गो फॉर हाई air drying, and after air drying you can also go for vacuum drying, or
वो combine करके you can increase the nutritional contents, the texture of the products. There are different combinations now available by which you can not just go for one kind of drying, but combine 2 or 3 kind of dryings. In air drying, there is also this problem that बाहर से ड्राइंग हो जाता है कुछ प्रोडक्ट्स जहां पे अंदर की ड्राइंग पे नहीं होती, which we call case hardening. That is what happens. So there is also a latest technology which is microwave drying. So after air drying, if you do microwave drying, the case hardening is also removed, because in microwave technology, the drying is from inside to outside. So one has to apply the applications of different technology, and making it hybrid helps in getting a better product out of the drying systems. This is about all. Thank you so much. Any questions? Thank you so much, सर. हम क्वेश्चन लेते हैं बहुत वक्त ना जाया करते हुए. तो अभी एक क्वेश्चनीजा के सवाल है कि what all the feasible packaging are suggested for freeze dried products? Freeze dried products are for freeze drying, a single poly packing is sufficient. And if you this is a high value product, so if you go for vacuum packing, then the shelf life is can be increased up to 3 years for vacuum drying, for freeze drying. थैंक यू सर. अभी थोड़ा समय का अभाव है, तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि जिन लोगों के भी सवाल है, हमने अपना मेल आईडी दिया हुआ है, आप लोग हमको भेज सकते हैं ताकि हम लोग आपके सवालों के उत्तर दे सकें विधिवत. और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा श्री अशोक आनंद जी का. वो आए इस वेबिनार में और हम लोगों के साथ अपना व्याख्यान, अपना इंफॉर्मेशन शेयर की. थैंक यू सो मच सर. और मैं अत्यधिक समय न लेते हुए मैं श्री पुष्पा जी हमारे साथ बनी हुई हैं, मैं उनको इनवाइट करूंगा अपना व्याख्यान देने के लिए. डॉक्टर पुष्पा चेतन कुमार, मैम आप मुझे सुन पा रही हैं? डॉक्टर पुष्पा चेतन कुमार. Good afternoon, all the participants. I think since morning we have been hearing very wonderful lectures from all the expertise on different processing methods like drying, vacuum drying, and minimally processed beverages, all those things. So at the ICR IHF, we have post-harvest technology and agriculture engineering division. So here we have developed more than 50 technologies, and we have licensed many technologies to so many entrepreneurs. So today I'll be presenting you like what are the novel technologies we have developed at ICRIH. Yes, so next slide please. Okay, just for the information of the participants, so ICRIHR, it's a very old institute. We have already finished 50 years. It has been established in 1967, and we work on 54 major crops across fruits, vegetables, aromatic plants, medicinal plants, ornamentals, including mushrooms. And we have released a number of varieties also. Next slide, please. So to tell you about our technologies, at IHR, we work on different aspects. So we have more than 250 technologies. So in the post-harvest technology itself, we have 87, but it includes both value-added products as well as agriculture machineries. Apart from that, we have
different technologies from seed and planting materials. We have a biopesticides. From plant health management category, we have around 24 technologies. We have farm implements and machinery, and also we have a biotechnological products. So this is the number of technologies, and every year we have been adding the technologies across different theme areas. Next, please. So coming to value-added products, means processed products from fruits and vegetables. So I'll be giving you which are all the technologies that are identified at institute level and even at ICR level. And these technologies are ready for commercialization. Means any entrepreneurs, any FPOs, self-help groups, those who are interested to start a business, they can license these technologies and they can start. So to start with, actually we have 2 to 3 categories of products. One is, I'll start with the shelf life extension of the products. Means one is a value-added products, and this is where we have developed certain protocols. Suppose if somebody wants to export anything, or if somebody wants to have a cold storage method, so for them these technologies will be useful. These are some of the protocols we have been we have standardized at our institute. One is we have standardized for delay ripening of the climatic fruits. So using the ethylene inhibitors. So you must be knowing, like now actually, especially in case of mango, we have been hearing like many vendors, they are ripening mangoes using the carpets and other things. So in this case, we have used a natural ethylene gas. So you can, suppose if you want to extend the shelf life, we can delay the ripening. Suppose if we want to transfer anywhere or through flight or through this thing, ship, we can delay the ripening system. And we have to enhance the ripening also, for uniform ripening also. And we have a controlled atmosphere and modified atmosphere packaging technologies, where you could see for mangoes at 45 days, we can extend the shelf life at a controlled atmosphere storage at 8 degrees Celsius. So like this, we have developed for different fruits and vegetables. Yeah, next slide, please. I'm not able to see my slide. Yes. So this is another protocol where different methods have been integrated, and it has been developed especially for mango, carrot, and tomato. So here also you can see the carrot, which have been stored for almost 150 days at 0 degrees Celsius by following various pre-treatments. So like this, we have these protocols for different fruits and vegetables. Next one, please. So I said that one was like to extend the before technologies what I was talking about. It was to extend the shelf life, means to delay the ripening. Suppose if somebody wants to transit the fruits and vegetables to some other place. So this technology is the low cost ripening technology. Like if we want to ripen the fruits at the uniform condition, then we have this low cost ripening technology. So here it will enhance the ripening, but at the uniform condition, means you can ripe all the fruits at a time uniformly. You will find uniform color and the uniform texture and taste. It is safe because here we are using only natural gas, ethylene, and it is approved by FSA also to utilize by the retailers or wholesale market people. And it's a very simple method. You can see we have this shows that it's just a cubic thing where we have to use the polythene material as well as some pipes. So for different quantity of the fruits, there's a different space we have to create, and it's a very simple. The ingredients, means the raw material which we need to create this
setup is also easily available to the farmers and to all the vendors, and they'll get a Ithral, which is a solution they can get from any pesticide or fertilizer shop, and it will cost only 20 rupees to ripe 1 ton of fruits. Especially in this season for mango, it is a very useful method, and anybody can adopt this technology. Next, please. Okay, coming to value-added products. So that is about fresh fruits and vegetables. Now, we have developed many value-added products. So since morning, we have heard about osmo dehydration technology also. So we have developed more than 8 value-added products from different fruits and vegetables, including mango, papaya, guava, amla, jackfruit, kiwi, and many are in pipeline also. So you know the technology, how it will be done, and what is the principle behind it. It improves the color, flavor, and overall quality of the fruits and vegetables. Mainly, this we can use it as such as a snack food to children, especially, and even to the elders. And also, it can be utilized as an ingredient in other products, especially in case of ice creams, in case of muesli, in case of cakes, confectionery products, cookies. So that is the benefit of this osmotic dehydration of these fruits and vegetables. We can store these samples for almost 1 year, and it gives an excellent flavor and color. And one thing is, here you can see in this picture, we have it shows a very brightly colored fruits and vegetables, and we have not utilized any colors in this. It's all naturally colored fruits and vegetables. And one more is, we have also developed one amla product utilizing kokum fruit extract. You might have, I don't know how many of you know this kokum fruit. It is available mainly in coastal area in Maharashtra and all. It is a very sour fruit, but it is very rich in anthocyanin pigment, which is a natural pigment. So we have extracted that pigment, and we have utilized to develop this amla segments. So it gives a naturally colored amla segment, which is both attractive as well as nutritionally rich. So these technologies we have transferred to many licenses they have taken, and they are also selling it like in Diwalis and all. We will give dry fruit gifts, nuts, seeds, and nuts. So instead of that, this kind of dried fruits and vegetables also can be given as a gift. So the one who purchases this technology, they can explore so many fields to utilize these osmotically dehydrated products, and it is also less bulky. So for transportation also it is easy, and it acts as a healthy snack especially. Next slide, please. मैम वी हैव शॉर्ट ऑफ टाइम, तो थोड़ा हम रनिंग फास्ट थोड़ा करेंगे, तो प्लीज, है ना, तो ताकि हम क्वेश्चन आंसर ज्यादा ले पाए, क्योंकि पीपल आर वेटिंग फॉर क्वेश्चन आंसर. थैंक यू मैम. ओके, नेक्स्ट प्लीज. मैम इससे भी नेक्स्ट. Okay, fruit bars. This also, you know, we have many fruit bars developed from many fruits and vegetables. Next. We have different powders also prepared from onion, tomato, moringa, and banana. This thing, so it can be utilized for the preparation of any other food products like baby foods and other masala powders and other things. So I'm not able to see anything. Yeah, next. Yeah, this is one new technology which has been developed recently. That's tray-dried dragon fruit powder and also spray-dried dragon fruit powder. Since spray drying is a very costly one, as the previous speaker told, we are working on a tray-dried. Sorry, it's not dragon fruit; it's avocado powder. So we are working on a tray-dried avocado powder also, because you know that it is very rich in omega fatty acids, and this dragon fruit powder can be utilized as a natural coloring agent in many of the foods. We tried in cakes, muffins, and other things. It will give a very pink, baby pink color. Next.
And we have minimally processed cut fruits and vegetables. We have a cluster of vegetables from carrot, capsicum, coriander, French bean, and other things. And we have fresh cut fruits also from jackfruit, pineapple, and papaya. You know that jackfruit here in South India, we prefer ripened jackfruit, but in North India, it is not that much is there. But recently, our technology has been taken by one of the entrepreneurs, and he's he's supplying to Delhi market also this jackfruit bulbs, and it can be stored for around 6 to 21 days in cold shelf, like in supermarkets. Next. And we have food beverages. So food beverages, we have two categories. One is ready to serve beverages, and another one is a squash, like where we have to dilute and consume it. It has been developed from various fruits and vegetables. They contain a very good amount of bioactive compounds, which have a very good antioxidant activity. And all these beverages can be stored for 6 months at room temperature. And there is no artificial color and artificial flavors have been utilized in our food beverages, and we have not used even concentrates also. Everything has been prepared from the pulp and juice of the fruits and vegetables. Next. So these are some of the technologies. You can see watermelon, and we have developed a bitter gourd RTS also for diabetic patients. You know that it has anti-diabetic properties. It can reduce the sudden spike in the blood sugar level. So for that also we have come up with the RTS beverage. We have a grape squash. Next, please. We have a ready-to-serve beverage from the jackfruit bulbs, because you know in South India we generally enjoy ripened jackfruit. So for that reason it has been developed. And in 2023 we have come up with this dragon fruit RTS, because the cultivation of the dragon fruit is increasing in India, and there is a huge demand for the value-added products from the dragon fruit. And in 2025 we got a patent for this technology also. It gives an excellent color, and you can see in the picture also, it gives a very bright purplish red color. And there is generally dragon fruit has a mucilage kind of thing. It is a slimy texture. So we have overcome that issue, and it is a very smooth mouth feel it has, and there is no seeds, and it can be stored for 6 months. There is no degradation in the color up to 6 months. Next, please. Ma'am, can we switch for a question answer session if you are comfortable? That we have short time hai hamare paas. Okay, otherwise you can just go through the slides, because at least they'll know the technologies that are available. Carrot, beetroot, apple, jamun juice beverages. Next. Yes. From sour soup and also central RTS, which is a medicinal plant which enhances memory. Next. We have a probiotic food beverages, because currently only Yakult is there, which is a milk based, but we have come up with for the first time fruit based and vegetable based. Next. We have wines from different fruits, which contains around 9 to 12% alcohol content. Next. We have a long-term preservation mangoes technology, which can be used for subsequent pickle preparation. Many industries have taken this one. Next. We have jackfruit seed-based confectionaries. Next. We have a tender jackfruit-based products, which acts as a meat analog, which can preserve for 18 months. Next. We have a jackfruit curry, kebab, and patties. Next. Next. We have one crushed tomato technology, which is equivalent to tomato puree. Next.
We have a culinary paste technologies. Next. We have one high humidity storage box. This is like without using any electrical supply or anything. These green leafy vegetables can be stored for 24 to 48 hours. I think it's done, sir. Only 2-3 slides are left. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for this nice presentation. Contact director. Yes, ma'am. थैंक यू सो मच। मैं सभी से अनुरोध करूंगा, मैम हमारे साथ बनी हुई है, उनके किसी की कोई सवाल हो तो चैट बॉक्स में टाइप करें या अपना हैंड रेज कर दें प्लीज। अरविंद जी सर, we can go for vote of thanks. Okay, sir. We already crossed the timeline. Okay, sir. Okay, sir. We'll take the question in the text and then we will revert accordingly. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Just a minute, sir. हाँ सर। विंजी, आर एबल टू हियर मी? सर आप, हाँ सर आपकी आवाज आ रही है सर। मैं अनुरोध करूंगा कि आप वोट ऑफ थैंक्स के लिए आप सब प्लीज अपना उद्बोधन शुरू करें सर। A heartfelt vote of thanks to all the dignitaries, all the distinguished speakers and participants for making the webinar on emerging technologies in fruits and vegetable processing and preservation successful under the PMFME scheme. This is a great successful training and webinar today we have completed. We sincerely express our gratitude to Shri Devesh Deval ji, JS MoFPI for his esteemed chairmanship and guidance, and also we are thankful to Professor Ashutosh Upadhyay sir, Registrar in charge NIFTEM-Kundli, for his constant support and leadership. We are equally thankful to our eminent speaker from industry and academia for sharing their valuable insights and enriching the session. A special appreciation goes to PMFME team, NIFTEM-Kundli, particularly Garima and Mr. Arvind Masingji, along with the NPMU team at MoFPI for their dedicated efforts in organizing and coordinating today's webinar seamlessly. We look forward for organizing many more such informative and impactful sessions in collaboration with the ministry under the PMFME scheme in future also. Thank you all. Thank you very much. It is already 1:48, so I think all are now may go for lunch. So thank you all very much. थैंक यू सो मच सर। और मैं देश भर से जुड़े सभी अपने DRPs का बहुत अभिनंदन और हार्दिक उनको धन्यवाद देता हूं कि वो हमारे साथ पूरे वेबिनार में जुड़े। साथ ही मिनिस्ट्री से सर देवेश देवल सर के साथ साथ हमारे साथ अरुणावा सेनगुप्ता सर भी जुड़े हुए थे और श्री राकेश त्रिपाठी सर भी जुड़े हुए थे। मैं उन दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और सर की प्रेरणा की वजह से ही ये पूरा वेबिनार हम लोग बहुत अच्छे से कर पाए। सर का सानिध्य हमको इस पूरे वेबिनार में मिला। सर उसके लिए बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद आपका और आशा करते हैं कि भविष्य में हम और इसको और बेहतर तरीके से इस तरह से वेबिनार को कंडक्ट कर पाए। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अत्यंत गौरव और सम्मान के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर। थैंक यू एवरीवन। मैं सभी पार्टिसिपेंट से कहना चाहूंगा इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग आप लोगों को शीघ्र निफ्टम-कुंडली के YouTube पेज पर प्राप्त होगी। इससे संबंधित जिन लोगों के हम लोगों को लिख सकते हैं, हम आपके सवाल एक्सपर्ट से भेजेंगे ताकि वो आपके सवालों के जवाब दे सकें और आशा करते हैं कि आपको इसका पूरा लाभ मिला होगा। पुनः आप लोगों को धन्यवाद देता हूं और अन्य किसी चीज के लिए आप हम लोगों को लिख सकते हैं। मेल आईडी हमने चैट बॉक्स में टाइप किए हुए हैं और आप हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस वेबिनार के लिए, आप सबके जुड़ने के लिए और इसी के साथ मैं इसका समापन करता हूं। धन्यवाद।